I, CA Shankit Sharma, welcome you all in the last day of our GST session organized by CARC of ICAI. I would like to extend my warm welcome to our chief guest, Pankaj Gia sir, who is a founder and owner of Gia Legal. It is a firm providing complete legal and tax solutions. The team consists of chartered accountants, advocates, and MBAs working in the field of legal support and tax matters. Sir has over 32 years of professional experience in the field of indirect taxation and corporate litigations. Sir has written various books on Rajasthan VAT and also written 6 books on GST. And I would also like to welcome our speaker today, advocate and CA Rahul Lakhwani sir. He is currently practicing as an advocate at Rajasthan High Court. He is a senior partner in Chiramit Legal LLP and head the taxation division of the firm. He regularly appears before various writ courts and appellate forms. Now I would like to I would like to hello. Wait. Sure, sir. Hello. I would like to welcome our Kishore sir to welcome our chief guest and speaker. Kishore, over to you, Kishore sir. Thank you, Sankit ji. Is it audible? I am not able to speak. Hello. Sir, it is audible and we are. Your voice is clear. Please, sir. Okay, thank you. Highly respected chief guest of the today's event, CA Pankaj Gia sir. Speakers of the session, Advocate CA Rahul Lakhwani sir. Moderator of the session, CA Sankit Sharma ji. My co-colleague CA Lokesh Maheshwari ji, CIRC chair, CIRC secretary Rajiv Gupta ji, treasurer of the CIRC, and my dear friends, I CA Kishore Baradia, vice chairman of CIRC of ICI, welcome you all on this webinar on 5 days specific provision and analysis of GST, industry specific analysis, I would say. And as we all know, we are celebrating 75 Azadi Ka Amrit Mahotsav, and I would like to inform you all that we as a ICI or CIRC also conducting back-to-back 75 activity since last 1st June 2022, and it will conclude on 15th July of this 75 days activity. So चूंकि कंटिन्यू हम लोगों की एक्टिविटी चली रही है अलग अलग वेरियस टॉपिक्स पे, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री पे चूंकि जीएसटी भी 5 इयर्स का हो गया है और हमें आईसीआई को कहीं ना कहीं 5 इयर्स ऑफ जीएसटी की डिटेल्ड एनालिसिस डिपार्टमेंट को भी देनी है, गवर्नमेंट को भी देनी है, और डिपार्टमेंट भी हमारे मेंबर्स के साथ में कंटिन्यू 5 इयर्स की जीएसटी में हमने क्या पाया और क्या खोया, इसकी एनालिसिस के लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं। हमें एक डिटेल्ड मेमोरेंडम भी इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट को देने हैं, डिपार्टमेंट को देने हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशंस को चालू करने के लिए एमओसी से रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request Pankaj Gia sir to address us all. Over to you, sir. Thank you, Mr. Sharma, and I would request you to allow me to open the video because my video has been stopped by the host. So if possible, it can be done, but I would continue with the topic. Friends, it's really a wonderful day, and I am thankful to CIRC for giving me an opportunity to be a guest on this discussion on the judicial aspect of GST. I have a very learned speaker in Mr. Rahul Lakhwani, a very good friend, and he is a wonderful speaker on the subject with having a vast knowledge. What I would say is that the GST judicial journey is somewhat, litigated way of working. It is really in the start when the GST has come and all the public platform we had heard was that, oh, GST is very simple. It is a one-page
a single return, and I had been in a meeting day before yesterday, and one of the speaker was saying when the GST was being marketed, it was said that it would be a simple subject in tax laws, and even a 8-year boy or a boy who is studying in 8th class would be able to file the GST return. And now after the 5th year of the GST, when we see in retrospect, we see that it has been a different story altogether. Friends, the GST litigation has started from the very beginning, and because of the input tax credit, the restrictions placed in the input tax credit, and the interpretation taken by the department on the allowability, deniability, or legality of the input tax credit. Section 16. In fact, Section 16, each and every subclause has been challenged in the court. And in most of the cases, the final decisions are still awaited after 5 years. If we go to the legal decisions which has been finalized by the Honorable Supreme Court, be it the Aap and Company decision where the Gujarat High Court was in favor, the Madras was against, but finally the Supreme Court decided against the assessee. The Bharti Airtel judgment, again we got a very conservative view from the Honorable Supreme Court. The Mohit Mineral judgment, though the decision has come into favor, but with all negative aspects which has been considered and dealt with in that judgment. My learned speaker, I will be hopeful be covering all these aspects. The Tran 1 cases still the Supreme Court, the matters are long pending, and we are all finally awaiting a decision. But there are contrary judgments from various high courts, and we are still waiting what would be the impact. The Rajasthan High Court has not given a favorable view, but if you go to the other high courts, there has been a favorable view. But ultimately what boils down to the litigation is whether the input tax credit would be allowed and what would be the stage of going to the litigation. Section 16(1), furtherance of business. It is again in challenge at every stage. The Odisha High Court judgment in Safari Retreat, that has paved way that in certain cases you can take credit. But alas, whether other high courts will allow it or not, though the Supreme Court has not stayed the judgment and notice has been issued, but let's see what could be the final impact. And then we will have to frame a strategy, because judicial activism or judicial filing of writ petitions are something which we have to foresee in both ways, whether we can file a writ petition and whether what would be the benefit arising out of that litigation. Then section 16(2), whether 16(2) is applicable, whether it starts with a notwithstanding word or a non-obstante clause, and whether 16(2)(c) is legally valid. What happens about the earlier pre-GST judgments in Arise India or other judgments? We will have to see. The judgments given by the Kolkata High Court and Madras High Court in certain cases, we have to see the veracity, whether that will be upheld by the Supreme Court, because now what is happening is that we cannot base our litigation on a judgment of a particular High Court which is either in favor or against. Then DY Bethel judgment, some says it is in favor, some says it is against, but we will have to reconsider whether DY Bethel judgment actually is in favor, because nobody is reading that judgment and is citing that judgment in the reply. So all these things, then the major litigation would come about the treatment of the discounts and the financial credit notes. It is something which everybody would love to understand, what is financial credit note, whether there would be a tax liability, whether there is a requirement of reversal or not. And then the last thing is the mining one. What to do in the mining cases? Some high courts are giving stay. Now there is a 7-bench judgment, Supreme Court judgment, which is in favor and saying that mining is tax. So tax on tax cannot be levied, but it has been referred to the 9 judges bench. But alas, in the Rajasthan High Court, we are still fighting. The notices are being issued, but what about the stay? It is somewhat tricky, because one stay was granted, but other benches are taking different view. So these are something of the nitty-gritties of the litigation. These are on the legal issues. But what about when you get a notice? What about when you get a summon?
What about when you get a 73 or 74 SC and we say it is something whether we have to challenge in the writ petition at that stage or not, whether there would be benefit because the alternative remedy question comes into picture. All these issues are to be considered when you discuss about the judicial activism and judicial proceedings when we go on into that. My view is that every aspect has to be considered on the weightage of the facts and the law, and whether we want to take the legal route or not. Because like in summons, what to do and what not to do, whether to appear or not, whether to go into a writ petition or not, that is something you have to take on each and every factual aspects also. So the legal litigation would continue, the judicial decisions would continue. Alas, if we can get some support from the Supreme Court and we can get getting some good favorable judgments from the Supreme Court, it would be really very helpful. We are hopeful that the department would also consider that it is not wise to go into litigation on a tricky issue, on a simple procedural issues, and go for the amendments and try to curtail the litigation. But alas, then you have to foresee that the cross empowerment in the jurisdiction of the CGST and SG authorities, that is the subject matter of the GST Council meeting tomorrow. It will open up plethora of litigation for the times to come, because on the similar matter, there would be notices issued by two different authorities on the same issue. We are facing, Rahulji would be dealing with certain examples, but we are facing many cases where on a similar issue, 3 states have issued notices because of the input tax credit, because of the bogus bill issues, or because of the transportation issues, and what to do and what not to do in the matter. I would not be taking much time. We have a very learned speaker in the subject, and he would be giving details of all the judicial decisions and everything. My suggestion is, when we go into litigation, try to go into litigation as early as possible, not at the stage of the order, because then the theory of alternative remedy comes into picture. The legal validity of the section and other aspects, the interest part, the penalty part, that has all to be considered, and the legality has to be considered while discussing about the judicial remedy to be taken. Judicial remedy does not mean only filing of the writ petition before the court. Judicial remedy also means filing of the appeals and the preparation of everything for the legal battle ahead, and that is required to be in detail, not in a cut short mode, and we have to start with everything. My all good wishes, and I would simply say the last 5 years has been the part of the practical and procedural aspect, but the next 5 years are the part of the legal litigation, the issue of notices, and the subject matter would be quite complicated, because you are getting one notice for every day in a case of assessee. And I would just be calling it off and ending my speech with one simple word. We had started with one nation, one tax, one taxation system. And we thought that for 1 year there would be one single notice. But now what we are seeing is, for one financial year or one assessment year, there are at least 10, 12, 15, 50, 100 notices. And it depends on assessee, how big our turnover, how big are his purchases, and how many faults are there or not. So it is not a case that we have to reply to one notice. And legal issues plethora are going to be open, a floodgate of litigation. So अच्छे दिन आएंगे. I will simply say with this word, I thanks the CIRC, particularly Mr. Anil Yadav, who has asked me to join today. I had taken more than the time allotted, and I am extremely sorry for that. And thank you, and goodbye to all my good wishes to you all. Thank you, sir. Thank you for your kind and inspiring words. Now, I would like to request our today's speaker, Rahul Lakhwani, sir, to continue with the topic and enlighten us. Over to you, sir. Sangeet, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
So all the dignitaries were present here and the fellow audience. First of all, I want to thank the CIRC for organizing this program, because really it is very important for all of us to have a recap of what we have done in the past 5 years. Yes, GST is obviously an evolving law, and 5 years is a very small time to conclude upon anything, but still, thank you so much to the CIRC for organizing this program. Now, I would first of all want to thank Pankaj for giving me a, I should say, clean field to start sowing the seeds whatsoever I've made out in my presentation. Thank you so much, Pankaj, and so nice of him, because I tell you, he's one of those seniors who are the stars of the, I should say, the indirect tax profession in the state of Rajasthan. And really, we learn and admire him a lot, because he's a one who litigates the matters in a manner where he's looking more towards getting solutions for the public at vast through various forums. And he himself is on always on a board of the AIFTP, where he takes all those issues which are really required to be looked out from a common business or a common professional point of view, because that's those challenges which may not be able to directly be sorted out by the department, that can only be done through the some sort of court intervention, and that he takes up a lot. And many times, if given chance, I to support him on those. So thank you, Pankaj, for giving me a background to start my deliberation upon. And obviously, NLG, I would like to thanks for inviting me for the program. Now, to begin with, I first of all want to share my screen, as I have prepared some PPT to discuss upon, or just to guide the flow of my presentation. Even though there is a lot, but still it need to be in a structured manner. So can anyone, Lokesh, can you just let me know the screen is appearing correctly? The Yes, sir. judicial journey of GST. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So to begin with, as we are discussing the 5 years of GST, so I have tried to prepare a sort of report card. And when I say report card, it's not necessary that on every front you are going to be a star performer. To this government, yes, they have, first of all, the idea of implementing GST was not that easy. We all know, when we have a federal state of government where center and state all pulling themselves to give up their side of the things. And also, I would say that there's a strong opposition always to take care of the point that anything you do which goes against the, I should say, benefit of the any strata of society or any particular class of society, they are one who are going to raise their voice. So it was never that easy, but they have uh, brought it. And now, what is the 5 years scorecard? Let's understand it. To start with the important point, I want to start with the revenue collection. So 1,60,000 crore is what they have touched, to my understanding. What figures, it may be some 5-10% here and there, but 1,60,000 crore, what I remember, is the figure they have achieved in terms of GST revenue collection in a month. That's the highest figure what I'm talking about. I would say, obviously, GST has helped out government in increasing the revenue collection in terms of entirety, if I would say. Why that happened, we will discuss in coming slides. मैं करूंगा उसको बहुत डिटेल में डिस्कस, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन एक चीज है, वो बढ़ा, लेकिन कैसे बढ़ा, क्या हुआ, टैक्स रेट बढ़ाए गए, या फिर मैं बोलूं कुछ लूप होल्स थे जिनको प्लग किया गया, क्या हुआ? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन दो ही तरीके से बढ़ सकता है, या तो आप टैक्स रेट बढ़ाओ, या फिर वो लोग जो पहले टैक्स नहीं दे रहे थे उनको टैक्स रिजाइम में लेके आओ. दैट कैन बी द ओनली टू वेज बाय विच यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर रेवेन्यू. Obviously, when we talk about, because I have done a lot of GST impact study at the time when the GST was implemented. Yes, there are many sectors in respect to those. There was set off available, because of which the cascading of tax was removed, and accordingly the prices of goods need to be reduced. But I tell you very frankly, ये बड़ा ही superficial concept है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि कैस्केडिंग की वजह से गुड्स के प्राइसेस को ऊपर नीचे किया जा सकता है. और एक अपन सब जानते भी हैं कि लॉ में एक प्रोविजन है कि देयर नीड टू बी नो एंटी प्रॉफिटरिंग. बट जब मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, तो ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर गुड्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जीएसटी या टैक्स की वजह से होते तो बहुत डिफरेंस होता है. ये एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई पे गवर्न करते हैं. तो इवन दो रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का बड़ा, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स कम हुआ,
और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने का रीजन ये रहा कि काफी सारे लोग जो पहले टैक्स एम्बिट में नहीं आ पाते थे वो भी टैक्स एम्बिट में आए, और काफी सारे डीलर्स है जिनका टर्नओवर शायद कैप्चर नहीं होता था वो कैप्चर हो रहा है। स्टिल आई वुड से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कैस्केडिंग इफेक्ट हटने की वजह से कम हुई। आंसर इज नो। तो मैं रिपोर्ट कार्ड में ये प्लस कहूंगा कि रेवेन्यू कलेक्शन तो बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हटा के गुड्स की वैल्यू और प्राइसेस को कम करना था, नो सॉरी, दैट नॉट हैड हैपेंड। सो लेट्स दैट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस, रीजंस में अपन और डिटेल में जाएंगे। The second was ease in compliance. So to my audience, I would like to give you two perspective on this also. पहले मुझे पता है, I used to deal for a single corporate or a single SSE, कि वो मुझे एंट्री टैक्स का लिटिगेशन देते थे, वैट का लिटिगेशन देते थे, लग्जरी टैक्स का लिटिगेशन देते थे, सर्विस टैक्स का लिटिगेशन देते थे, अगर एक्साइज एप्लीकेबल तो एक्साइज का लिटिगेशन देते थे, उसके अलावा लोकल चीजों की तो एडवर्टीजमेंट टैक्स का लिटिगेशन देते थे। टॉक अबाउट ये लिटिगेशन देते थे, मतलब obviously I get earn my bread and money from that thing, so I say that litigation dete the, but the point is that assessee has to see those notices and have to take care of those authorities who are looking after that law, and they have to give an answer upon that. Has significantly reduced because now they have at least to focus only upon a single law, that is GST. So if I say on the point of report card in terms of ease in compliance, I am 100% on the side of this, that yes, on account of implementation of GST and subsuming the laws, the compliance part has reduced and they have gotten easy in terms of looking after multiple laws. But when I say whether we have a smooth implementation of GST, because जैसे पंकज जी ने background दिया, हमने तो GST आते ही पहला litigation ट्रांवन के नाम पे चालू कर दिया. This is not good. I tell you frankly, on certain aspects, I feel that this GST implementation should be given a negative or darker negative line, that they are not having a trust factor with those businessmen who are actually, I should say, I becoming happy on account कि अब उनको 5 लॉ नहीं 1 लॉ करना है, लेकिन उन्हीं के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है और उनको वो एक सिंपल ट्रांजन क्रेडिट नहीं देना चाहते. Why that? I would like to relate. बिकॉज जो यूएई है उसने भी अपना वैन 2018 में इंप्लीमेंट किया था. आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद बोथ द जीएसटी रिजाइम एंड द वैट रिजाइम इन द यूएई, और कुछ चीजों के फैक्टर्स मैं आपको कंपैरेटिव में बताता हूँ, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पार्ट्स हमेशा गवर्नमेंट की विल के ऊपर डिपेंड रहता है. दे हैड अ फैक्टर देयर कि 5 ईयर देयर वाज अ कूलिंग पीरियड. व्हाट डज दैट कूलिंग पीरियड वाज? क्या करो थोड़ी बहुत गलती, we will not going to create any problem to you and not going to penalize you, because they also know that when something new comes, it has to be implemented, you give them a cooling period. So why can't we have the same thing in the country? We are talking about putting up penalties on 17-18 issues, 18-19 issues, जहां पे अभी एसएससी सीख रहा था, उसको नहीं पता था, उसने कोई गलती कर दी तो उसको एक हैंड होल्डिंग दे दो ना, उसको एक टाइम दे दो, जब तक पेनल्टी ना, क्या कमा लोगे फीस से? what revenue is going to come up on account of fees, interest? They say that we are going to make sure that these persons work, they should ऐसा नहीं हो एसएससी टाइमली अपनी रिटर्न्स नहीं भरे या टाइमली कंप्लाइंस नहीं करे, इसलिए हम उनके ऊपर फीस लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे. क्या 25-50 रुपए की पेनल्टी इकट्ठा करके आप उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हो? हैव सम फेथ ऑन दोस हु आर योर टैक्स कलेक्टर्स, because if you have faith on them, they will definitely give you a good results. So the perspective and obviously यूएई के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये था कि 5 साल के बाद वहां पे इतनी ज्यादा इनॉर्मस पेनल्टी है कि अगर आपने एक इनवॉइस में गलती करी, इट रीचेस टू अराउंड say 2000 dirhams, and which amount to 40,000 rupees for a single invoice mistake. But the point is, first they have given a liberal approach, क्योंकि देखिए आप कितना भी कर लो, लॉ आपको व्हाइट पेपर दे दिया था 1 जुलाई 2017 से पहले उसके आने के 7 दिन 10 दिन के अंदर इन्होंने इतने सारे चेंजेस लाए थे. क्या आप बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उससे पहले तैयारी करके रखेगा? अगर ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दो. जब आपका लॉ आ गया, आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू हैंड होल्ड हिम. अगर उसने कोई रिटर्न गलत भर दी तो उसको रिवीजन का ऑप्शन दे दो. अच्छा रिवीजन का ऑप्शन नहीं दे तो ऑफिसर को पावर दे दो. एटलीस्ट पेनल्टी और लेट फीस से लगाओ ही मत उस चीज के ऊपर. आपके तो हमने कम लगा रखे, अरे कम भी क्यों लगा रखे? उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन आने दो. सो ease in compliance, if I say, I find negative point in this perspective. But obvious teething troubles आए और बहुत सारा fresh litigation आया, classification के कई issues आए, compliance के कई issue आए. I will not spend much time on that as I have discussed earlier. But yes, if I say teething trouble
in terms of litigation high courts काफी सारे हमको फेस करने पड़े अंदर जीएसटी डिजाइन, और कर रहे हैं, और अभी भी काफी बाकी है. Now this is a part curbing tax evasion. I would say कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें I would give A+ to this government in terms of curbing tax evasion. मैंने मेरे सेशंस को 2 पार्ट में बांटा है, बिकॉज आई टेल यू आई हैव टू, जब अनिल जी से थीम डिस्कस हो रही थी सेशन की मुझे क्या करनी है, so we decided let's do it in a manner which is covering the entire industry as we are doing it on the last day and my availability was accordingly. So I requested him, let me take care of something which is impact each and every sector. तो इस तरीके से मैंने बांटा है कि मेरा फर्स्ट पार्ट होने वाला है मेजरली ऑन menace which is relating to some sort of fake invoicing, and the second part I have taken some important judgments which have come during this 5 years of journey. So we are covering in that. So this curbing tax evasion I would be discussing in detail, that I will give why I will give A+, because they have actually done those efforts by which there were tax evaders who were earning their bread and butter, or better not to say bread and butter, but getting making their huge mentions from the income which they earn by doing a kind of racket or tax evasion. But that has, because of the way the GST has been implemented, the way they have made out a single platform for putting up the transaction, that has been taken care of. GST as a body to interpret legal provision, ये एक बड़ा नया फैक्टर आया. आज तक का हमेशा से रिकॉर्ड रहा डिपार्टमेंट और एसएससी, या डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स जो एसएससी को रिप्रेजेंट करते थे, यही लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं. हमें एक नई बॉडी दे दी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, अब वो भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है. एंड आई टेल यू द गुड थिंग अबाउट लॉ इज द पर्सन हु इज रीडिंग कैन हैव हिज ओन पर्सपेक्टिव. अब आपने जैसे जीएसटीएन को पावर दी कि लॉ का इंटरप्रिटेशन करके यू हैव टू गिव अप अ व्यू, you have to make up the portal, or you have to effectively give up a conclusion to something which has come. तो चैलेंज क्या होगा, उनका इंटरप्रिटेशन और एसएससी का इंटरप्रिटेशन डिफर हो सकता है, और जैसे वो डिफर होता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन लॉ की होती है, जो इवन ऑफिसर्स एग्री करते हैं, वो जीएसटीएन पे नहीं मिलता. कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, माय फ्रेंड्स हु रीचेस टू द डिपार्टमेंट सेइंग दैट देखिए पोर्टल पे ये दिख रहा है, तो लॉ में है ही नहीं. फिर वो भी ये कहता होगा हम क्या करें, ये तो पोर्टल की गलती है. हाँ, पॉइंट इज ये पोर्टल है क्या, व्हाई इट इज. This was something, a tool by which we and the department are going to interact. He was not there to do some kind of interpretation, but I tell you frankly, many times I find out they do their own interpretation, and which leads to another problem. But yes, that's how it is. Compensation says 2022 30 जून डेडलाइन थी, उसको 4 साल और बढ़ा दिया. अब देखिए ये होता है, आप क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल जो मैं बोलूं कमिटमेंट्स हो जाते हैं किसी चीज को लाने के लिए, कि किसी भी स्टेट का 14% इंक्रीमेंट अगर वैट पे लगाते चले तो 5 साल तक जो रेवेन्यू टारगेट पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, तो उसको कंपनसेट सेंटर करने वाला था. दिस वाज द प्रॉमिस गिवन बाय सेंटर्स टू द स्टेट, क्योंकि उन्हें लगा कि इन्होंने कुछ पावर छोड़ा. क्या पावर छोड़ा है, उनको मिला भी है, क्योंकि पहले वो सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगा पाते थे, तो अब उनको सर्विसेज पर टैक्स लगाने का पावर मिला. सो दे हैव गेन एंड लॉस्ट एट बोथ द एंड्स, बट ये नेगोशिएशन का पार्ट बना, और अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि वी पीपल आर गोइंग टू फेस compensation says for further 4 years, that is till 2026. Who's the payer for that? Common man. Common man has to pay more taxes on certain item. I understand compensation is not applicable on all, it's applicable on limited items. But ये क्या, आपने एक कमिटमेंट दिया, लोगों ने अपना बिजनेस प्लान उस हिसाब से कर रखा होगा, अब आप उसको फर्दर बढ़ा रहे हो. This is how, but yes, that is what so many times happens. And ये एक important factor. I tell you, I came just today morning from UAE. There were some items which I purchased, so we tried to take a refund over out there in the UAE port. I was informed by the stores that you can take this voucher, give us a passport copy, and when you reach to the airport, there's a counter. You show them the good, you show them the invoice, and you will be entitled for cash refund of the VAT you have paid. I was saying that अरे अभी तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जरूर वहां पे लंबी लाइन लगी होगी, बहुत करने में दिक्कत आएगी. I was ऑफर टू माय फैमिली कि इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, but I thought let me just try and make out this view, and hardly in a 4 to 5 months exercise they granted me refund of what have been paid. And what is this concept that taxes cannot travel a country? It means that if anything is being exported, either the businessman is exporting or a consumer himself is taking out of the port, then he should be granted refund of indirect taxes. Why? Because it is a destination based tax and the destination country will take the tax.
ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, और वो फॉलो करने का एक तरीका ये होता है कि आप एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, आपको वहां पे ऐसे काउंटर्स देने पड़ेंगे कि कोई पर्सन अगर यहाँ पे जाके ये दिखाता है कि आपको ये गुड्स इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, तो हम आप इस पे जो भी वैट आपने हमारी कंट्री के बिजनेसमैन को दिया हुआ है हम आपको वापस कर देंगे. एंड आई टेल यू वेरी एक्सीलेंटली दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन दैट कंट्री, बिकॉज दे हैव आउटसोर्स इट. 5% वैट लगता है, उसमें 5.5% ये काट के आपको 4.5%, बिकॉज इन्होंने बीच में एक एजेंसी को डाल दिया, एक प्राइवेट एजेंसी. उसका काम ये है कि वो डेटा को वेरीफाई करेंगे कि हाँ वही गुड्स जा रहा है, और साथ में जो कस्टमर ने जब बिल बनवाया तो उसकी पासपोर्ट की डिटेल्स मैच्ड है, और वही पासपोर्ट की डिटेल्स वो काउंटर पे क्लेम करेगा. सो द पॉइंट इज it's not that difficult to implement provided you have will to do that. In India, the GST law have this provision, but this has not been implemented even after 5 years of implementation of GST. Now this is something which is a saddened condition. A country much smaller than size of the our country has implemented it very effectively. Why can't we do it and earn a reputation in terms of tourism all over across the world? बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है अगर आप इफेक्टिवली देखें. अगर आप ये बेनिफिट्स देते हैं तो आपके यहाँ से लोगों की परचेजिंग बढ़ती है, एंड वंस परचेजिंग इंक्रीजिंग आपके यहाँ डोमेस्टिक जीडीपी बढ़ती है. आपको ये लगता है कि अगर हम वैट देते हैं, रिफंड कर देते हैं, तो हमारा टैक्स का नुकसान हो रहा है. सॉरी, दैट्स नॉट द केस. In fact, if you give that, the people start buying more in your country and they get foreign exchange for you. So this need to be understood as a concept and has to be implemented. Now, on this side also, if I talk about a report card and negative marking to the government, let's see what more time they are going to take in implementing that. But this need to be the need to see a day. क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते प्रोविजन डाल दो और उसको बस भूल जाओ कि ये किताबों में था ही क्यों. So if the CIRC is sending any kind of representation after 5-year completion, I would definitely request them kindly incorporate this point, because this is going to be highlighted. And in terms of corona hit hospitality industry, if they do this, I am pretty sure that the GDP will get the hospitality sector will get more revenue on account of people starting spending more in the country whenever they have to purchase. Now, once given you this, let me take up on my first set of the first episode of my presentation, which is about tax evasion. And we are doing a lot of, because I have to focus more on litigation. I tell you, last 4 years, I have done a lot of economic offenses court litigation under GST. And what this is all about, I'm going to share with you. एंड यू ऑल माइट हैव हर्ड, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा एक मिनेंस हुआ था गुड़गांव के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अरेस्ट किया था. एंड इफेक्टिवली स्टिल दैट प्रोसेस इज समथिंग इन लिंगर. द पॉइंट इज, वो जो प्रोसेस हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और क्या वो प्रोसेस के अंदर क्या रेमेडीज मिल सकती है, और क्या प्रोफेशनल्स के लिए. बिकॉज सी द आइडिया इज दैट ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरा टॉपिक, साथ ही साथ a professional who is in that field is also have to face these burns many times on account of बहुत सारे reasons हो सकते हैं कि उसने एक registration कर दिया. तो I'm just focusing 30-35 minutes on this particular aspect. So what I can do, I can give you a comprehensive view on that. बाकी detail we can definitely take up into Q&A session if at the end they have time for the same. देखिए, एक चीज पक्की है कि जीएसटी के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स एविजन बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड की टैक्स एविजन कंट्रोल हुआ डजंट अपीयर्स गुड. अगर अपन को इसी को समझना है कि टैक्स एविजन कंट्रोल हुआ, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज कंट्रोल्ड. देखिए, एक चीज जो कॉमनली आपको माननी पड़ेगी वो ये है दैट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ स्टेट अथॉरिटीज एंड द सेंट्रल अथॉरिटीज. और ये एग्जांपल को मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूँ. वी हैव पुलिस एंड वी हैव अ सीबीआई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? बोथ आर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कि उनका काम है कि कोई क्राइम हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करना. बट पुलिस हैज मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव टू लुक इनटू, whereas CBI is more a specialized body for the same. Now, what happens with the state and center authorities in terms of GST revenue collection? A state GST authority or state GST having an anti-evasion, or a center GST having DGGI as a supreme authority in terms of investigation. फर्क ये है कि उनका वर्किंग स्टाइल था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था. खासकर जब मैं बात करूं फेक इनवॉइसिंग के रैकेट्स को ट्रैक करने की बात, होता ये था कहीं ना कहीं स्टेट अथॉरिटीज के पास
एक पोर्टल ही अवेलेबल नहीं होता था जहां से वो एफिशिएंट डेटा एनालिसिस टूल्स लगा पाए। और उसके अलावा अगर मैं एक्साइज ऑफिसर्स की बात करूं तो उन्होंने डीजीजीआई से पहले जो होती थी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, उसमें वर्किंग करके ये कई बार समझा था कि डेटा शेयरिंग या फिर डेटा फाइनेंशियल टूल्स इनको यूज करके कैसे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड को ट्रैप किया जा सकता है, दैट दे हैव। और उनके पास डेटा एक्सेस किससे होती थी? उनके पास डेटा आता था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज अ मिनिस्ट्री विंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक विंग है जो क्या करता है, बैंक अकाउंट्स के ऊपर जितने भी बैंक सारे उनको रिटर्न भेजते हैं, यू कैन से लाइक दिस। और अगर कोई डेटा पैन लिंक्ड है बैंक के अंदर और उसकी रिटर्न से मैच नहीं करता, सो दे गिव अ रेड फ्लैग। दैट इज द वर्क ऑफ एफआईयू। इनिशिएशन पॉइंट वहां से जनरेट होता था, डीजीजीआई या डीजीसीआई के पास आता था, दे स्टार्ट वर्किंग। नाउ द पॉइंट इज, ये स्पेशलाइज वर्किंग सेंट्रल अथॉरिटीज ने कई बार कर रखी है और उनका एक्सपर्टाइज को यूज किया गया जीएसटी के अंदर। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जो सेंटर वाली अथॉरिटीज थी उनके पास कभी भी ट्रेडर ट्रैप में नहीं आता था। क्यों? उनके पास एक्साइज और सर्विस टैक्स, बस यही दो लॉज थे। और एक्साइज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुई और काम खत्म। लेकिन इसके बाद चालू होता था एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सब रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचता था। तो ये जो तीन लोग थे या चार चेन्स थे आफ्टर मैन्युफैक्चरर, वो लोग जो टैक्स एविजन यूज करते थे उसको टैपिंग करने के लिए कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास उनको इन्वेस्टिगेट करने का पावर ही नहीं था। दैट वाज ओनली विद द स्टेट। व्हाई? बिकॉज दैट वाज ओनली वेटेबल ट्रांजेक्शन। द पॉइंट इज, जैसे ही ये लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है जो हम सुनते हैं कि आज अरेस्ट किया, एक्सवाइजेड ऑफिसर को अरेस्ट किया, पीक्यूआर अरेस्ट को पर्सन को अरेस्ट किया, ये पहले ये लोग ये काम नहीं कर रहे थे। ये जो काम होता है बिलिंग का, ये आज नहीं बहुत टाइम से चला आ रहा था। द ओनली पॉइंट वाज अंडर जीएसटी। नाउ व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटीज केम इनटू पिक्चर एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग those persons who were doing VAT transactions, they have caught them red-handed and they are being arrested and taken care of. I will discuss some of the ways how the transaction is done, but I tell you now, the experience of those is also being applied on the traders, and when that happens, definitely the results are going to come. One is that. And now you have anti-evasion center, you have anti-evasion state, you have DGGI, you have state DRIs. Now there are four investigating agencies who are looking after the same set of law and same set of objective. ऐसा नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि भैया हम को तो क्या करना है, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर उसको पकड़ना है, या फिर मुझे तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स को पकड़ना है, या फिर मुझे सिर्फ ट्रेडर्स को पकड़ना है। अब इन चारों अथॉरिटीज का ऑब्जेक्टिव कॉमन है कि हमें तो हर उस पर्सन को जो कि बिजनेस कर रहा है, चाहे गुड्स का या सर्विस का, उनको पे फोकस करना है। एंड स्टेट वाले भी अब सर्विसेज वालों को देखने लग गए तो उनका भी फोकस चेंज हो गया। सो द पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे, when you have a common law and four intelligence authorities looking after the things, definitely the results are going to come, and this is what has happened in the GST. Second, I would say, हमने GSTN पोर्टल को क्रिटिसाइज तो बहुत किया है। क्रिटिसाइज करने का छोटा सा रीजन यही बनता है कि that was little difficult in terms of their implementation and teething issues, but I tell you, ये एक ERP है। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्रामिंग, सैप होता है या कुछ और होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा। ERP का पर्पस क्या होता है? दैट्स अ सिंगल सिस्टम और अ सिंगल डेटाबेस इन विच ऑल द डेटा इज पंच्ड एंड देन यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स। अगर आप ढंग से समझे तो व्हाट इज GSTN? GSTN is a portal, or better to say ERP of the government, जहां पे पूरी इंडिया के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब पंच होते हैं। आई होप सो यू आर फॉलोइंग ऑल आर फॉलोइंग मी, कि एक वो ERP है जहां पे पूरी इंडिया के अंदर, चाहे वो कर्नाटका में हो रहा हो, असम में हो रहा हो, मेघालय में हो रहा हो, पंजाब में हो रहा हो, केरला में हो रहा हो, पूरे ट्रांजेक्शन पंच होते हैं। अब इससे फायदा क्या मिलता है? क्या होता था, कई बार इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करके आप पैसे को इधर उधर करते थे या टैक्सेस एविजन करते थे, या अहमदाबाद से एक माल चला राजस्थान में जयपुर आने के लिए, दोनों के वैट अथॉरिटीज को कोई मतलब नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं उनके बीच में। सॉरी बॉस, ई-वे बिल, GSTN, इन दोनों ने इतना कॉन्क्रीट डेटा देना चालू कर दिया इन अथॉरिटीज को कि अगर अपन सोचें कि टैक्स एविजन आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं गलत नहीं हूं कहता हुआ। क्यों?
क्योंकि दे हैव बिकम स्मार्ट, दे हैव बीइंग मेड स्मार्ट बाय वे ऑफ डेटा एनालिसिस टूल्स। डीजीजीआई के पास जाते हैं, वो कहते हैं देखिए हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट आई हुई है, ये सब रेड फ्लैग्स है, इनको बस हमको जाके उठाना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है करने को। मैं कहाँ से कर लेंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। हमें पता लग जाता है कि ये एक्स आदमी है, इसका नाम जो है पैन नंबर है, इसको गलत यूज किया हुआ है, और इसका जो आईटीसी इसके नाम से बनाया हुआ है वो पूरा फेक है, क्योंकि इसकी तो इतनी नेटवर्थ ही नहीं है। क्यों? इनकम टैक्स के पोर्टल से जाके आपने इतना सा चेक किया कि उसकी रिटर्न कितने की गई है। तो जो फेक इनवॉइसेस बनाते हैं वो कभी भी इनकम टैक्स थोड़ी पे करते हैं। तो उनका पैन हमने इनकम टैक्स पोर्टल से वेरीफाई किया, और हम नहीं करते तो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हमको करके भेज देता है कि इनकी इनकम और इसमें मिसमैच है, जरा पता करिए क्या है। और 99% केसेस में इतनी सी टिप मिलने के बाद आप थोड़ा सा एलेबोरेशन करना चालू करिए, आपको पूरा का पूरा रैकेट सामने दिख जाता है। बिकॉज आज एक ऑफिसर यहाँ बैठा बैठा जयपुर के अंदर, वो क्या देख सकता है, वो ये देख सकता है कि इसको अगर आईटीसी किसी कर्नाटका वाले ने, केरला वाले ने दिया, तो वो उसने पीछे से आईटीसी कहाँ से लिया ये दिखता है, और अगर उसके पीछे आईटीसी नहीं दिखता, everything sorted out. So the point is, when you have that kind of ERP being developed on a size of 140, around 130, more than 135 crore population, उसमें टाइम तो लगना है, वो प्रॉब्लम आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार ये तैयार हो गया, एक बार ये अपने प्रॉपर फेज में पहुंच गया, सो टैक्स एवेजन इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। और वाकई में आप देखते जाने धीरे धीरे ई इनवॉइसिंग एक कंसेप्ट लाए, ई वे बिल, पहले ई वे बिल लाए, फिर ई इनवॉइसिंग लाए, फिर क्यूआर कोड का कंसेप्ट लाए, धीरे धीरे ये क्या करते जा रहे हैं, they wanted to do tagging of each and every transaction। और ये टैगिंग अगर और स्मार्ट होती चली गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेटा एंट्री बहुत इजी टास्क रह जाएगा, बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज नहीं होगा, आज से 4 साल बाद होगा। और मेरे काफी सारे जो मेरे लिसनर्स होंगे अभी इस डिस्कशन में, दे मस्ट बी दोस्त जिन्होंने टीडीएस का वो टाइम भी देखा होगा जब हम पेपरों में, आई रिमेम्बर माय दोस्त, कि हम पेपर से रिटर्न भरते थे और वो जाके डिपार्टमेंट में देते थे, फिर वो ऑफिसर कहीं से वेरीफाई कराता था उस टीडीएस को, और उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ईयर एंड में उसके संग बैठना पड़ता था, तब जाके वो रिफंड का चेक आता था और खातों में लगता था। आज टीडीएस का रिफंड कैसे आता है, वी ऑल नो। कितना टाइम लगा, 5 साल, 7 साल, 8 साल। Why it's not going to happen in GST, that is the point. तो मेरा मानना है this is going to happen in GST, and the day that happens the things are going to be entirely different। और काफी हद तक हो गया, मैं I have started seeing, और मुझे लगता है काफी टाइम में और ज्यादा हो जाएगा। Now coming back on, there are certain media highlights. I'm not going to spend much time on this. I'm just putting up that there are certain sites I have put where even my learned friends or my learned professional colleagues have become, I should say, somewhat being highlighted by the department in those transactions. I would say that whether what kind of precautions can be there for them if the time permits me. But yes, there are certain incidents which I have highlighted in this news, but I'm not covering them in detail. चलिए एक बहुत ही छोटी, क्योंकि अगर अपन लिटिगेशन की बात करें तो जितने भी ये जीएसटीआर टाइम्स आते हैं या फिर ये जीएसटीआर बेस्ड मैगजीन्स आती है, तो उनके लिटिगेशन में मैंने देखा मेजरली चीजें जो हैं, मैंने सोचा उसका मैं एक सेशन बनाता हूँ। सो अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, ये दो टर्म्स होते हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। What are they? First of all, let me explain this, and then I will take you कि ये जितने भी अरेस्ट अभी होते हैं ये क्या होते हैं, whether they are something कि ये पर्सन कल्प्रिट हो गया या फिर उसका होना बाकी है। तो देखिए हुआ ये, जीएसटी के अंदर ऑफिसर्स को एक पावर दी गई। पावर क्या दी गई? प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या, ये मैं बताऊंगा, विच इज इक्वल टू अरेस्ट, बट ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या? होता ये है कि आज किसी को ये पता लगा, एक ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता लगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का रोल है इन टर्म्स ऑफ कैरिंग आउट सर्टेन एक्सरसाइज ऑफ अवॉइडिंग अ लॉ अंडर जीएसटी, इफ आई टॉक evading GST. So he can investigate, but there need to be some time given for investigation. And during that investigation, if they are of a view कि ये जो पर्सन है ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, और बेटर टर्म में बोलूं, if he has a reason to believe that this person may create a problem in carrying out our investigation, so we can arrest him and put him in a judicial custody, and we carry out our investigation in a certain time and then file our report. Now this is what the provision is all about with respect to arrest. Prosecution क्या होता है? Prosecution यह होता है कि एक बार आपने अरेस्ट किया, उनको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया, फिर जिसने अरेस्ट किया वो अपनी बात जाके बोलेगा कि देखिए मेरे पास, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं,
टेक्निकली कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया हुआ है अंडर जीएसटी लॉ एंड इसलिए इसको बिहाइंड द बार्स डाला जाए। आई टेल यू, जितनी भी खबरें आप पढ़ती है सब अरेस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कल्प्रिट है, अभी ट्रायल तो हुई नहीं। आई टेल यू, मैंने 2018 के मैटर, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अरेस्टेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उनका ट्रायल 2017 से स्टार्ट हुआ। आज 5 साल हो गए ट्रायल का, मतलब मैं बोलूंगा 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ। एंड आई डोंट नो व्हाट मोर टाइम इट इज गोइंग टू टेक दैट ट्रायल टू गेट कंप्लीटेड। तो जब अपन बात करते हैं कि ये जो मतलब अरेस्ट या फिर ये बात करते हैं, इज दैट पर्सन कल्प्रिट? द आंसर इज नो। That is a preventive exercise. But the point is, I tell you, this has created a lot of, I should say, डर, terrified, और better to say कि एक तरीके से उनको जो बिजनेसमैन इफेक्टिवली ये टेक्टिक्स यूज करते हैं, उनको लगने लग गया है कि नहीं यार, let's earn little less money, but if my name comes and highlighted in the newspaper कि आज इनको अरेस्ट किया गया इस सीजन की वजह से, they are worrisome for that. And once they started get worrisome, the objective and the idea of putting prosecution under GST law gets fulfilled. लेकिन challenge क्या है? Power always comes with responsibilities. Officers को अपन power तो दिया, लेकिन क्या उसके ऊपर proper check लगा? क्योंकि मैंने कहा मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूंगा, पॉजिटिव की बात करूंगा, तो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं देयर इज अ नेगेटिव। आपने पावर दिया, लेकिन पावर के संग क्या आपने ये चेक लगाया कि उसका मिसयूज नहीं हो? क्या आपने पावर के संग ये लगाया कि क्या यहाँ पे एक दौड़ चालू नहीं हो जाए कि एक्स कमिश्नरेट देख रही है कि मैंने तो इतने का रेवेन्यू पकड़ा, उतने लोगों को अरेस्ट कराया, वाई कमिश्नरेट देख रही है कि मैंने इतने का रेवेन्यू कराया, उतने का, मतलब whether this I should say a kind of power parade get started, ये तो नहीं हो रहा है। बट आई फ्रैंकली टेल यू, कहीं ना कहीं ये चीजें भी आई हैव सीन इन द लास्ट 5 years ऑफ माय जीएसटी प्रैक्टिस, कि कहीं ना कहीं ये लोग आपस में किस चीज में आ गए कि भैया मैं फर्स्ट आऊंगा या आप फर्स्ट आएंगे। दिस हैज स्टार्टेड, बट द पॉइंट इज दैट्स हाउ अ सिस्टम इज ऑलवेज, कि उसमें पॉजिटिव्स तो होते ही है, लेकिन जो नेगेटिव्स होते हैं उनको जितना जल्दी ठीक किया जाए उतना बढ़िया। लेकिन जितना टाइम उन नेगेटिव्स को ठीक करने में लग जाता है, द good people get burned during that process, and this is how it is happening to an extent, to some transition, if I would say. Now coming to the conceptual part, because till now what I was doing, I was just giving you my experience and sharing with that, but let's move on to little academics now. You all can see a section here, which is section 69, which gives power to arrest. I have highlighted the term reason to believe. So this need to be satisfied by the commissioner before initiating arrest. Now the point is, reason to believe एक बड़ा ही comprehensive term है, और ये मैं यूं बोलूं बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ता है, और ये कोई नया टर्म नहीं है। टेली, अगर आपको पुराने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ देखेंगे, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, कि सर्च करने से पहले भी रीजन टू बिलीव होना जरूरी है, बिकॉज इट इज मोर देन रीजन टू सस्पेक्ट, एंड इट इज नॉट इफेक्टिवली अ कंक्लूजन तो हो नहीं सकता, वो तो आखिरी में आएगा, बट रीजन टू सस्पेक्ट भी नहीं हो सकता। सो द पॉइंट इज, एक सिंपल टेस्ट है जो कोर्ट से निकाला है, कि इफ देयर इज अ पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस इज ऑफ अ व्यू कि यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि टैक्स चोरी हुआ होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, क्योंकि कई रीजन टू बिलीव भी हमने चैलेंज किए हुए हैं, उसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे रीजन टू बिलीव क्या हो सकता है? रीजन टू बिलीव ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो इनकम टैक्स में दिखाता है 1 लाख की इनकम, और उसका टर्नओवर है से 25 करोड़ का, और उधर का जीपी जो है वो इतना है ना। ये एक रीजन टू बिलीव हो सकता है, अरेस्ट करने का नहीं, एटलीस्ट एक सर्च करने का। लेकिन अरेस्ट करने के लिए भी रीजन टू बिलीव सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके अलावा काफी सारी चीजों के टेस्ट है जो फुलफिल करने चाहिए पड़ते हैं। तो ये रीजन टू बिलीव एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, कि जहां पे एक रीजनेबल प्रूडेंस का आदमी वो कहेगा यार, जिसका अगर सिर्फ 1 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न है, उसका 25 करोड़ का टर्नओवर है, उसकी इंडस्ट्री का जीपी एनपी है वो कम से कम 2 से 3% है, तो भाई ये क्या हो रहा है? दिस इज सम प्रॉब्लम। सो यस, दिस इज अ पॉइंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, और इट इज लाइक वी कैन से दैट देयर इज रीजन टू बिलीव टू मूव फर्दर। सो this is a term which has to be satisfied technically and has to be satisfied where. Now let's discuss that. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फेक इनवॉइस, आप लोग बहुत सुनते होंगे। ये फेक इनवॉइस कोई लॉ में डिफाइंड टर्म नहीं है। एक इनवॉइस जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए उसको फेक इनवॉइस कहा जाता है। तो अब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दे रखे हैं सेक्शन 132(1) ए बी सी डी के अंदर। वी विल डिवोट लिटिल टाइम ऑन दैट। आते
All those who are interested in academics, I have reproduced the base section before all of you. I would not be literally reading each and every, I should say, the lines of the section for you people. But मैं जितने भी connected section में वो सारे नहीं पढ़ने वाला हूँ. But कुछ sections को मैंने यहाँ highlight किया है so that what may happen कि आप लोग यहाँ पे bare provisions को पढ़े. But if you really wanted to have a deeper understanding of it, I request that you go back and at the end of the session look into the law. Then you will get a clarity on it. तो मैं एक बार पहला सबसे पहले एक section है 132(1)(a) इसको चालू करता हूँ. Supplies whosoever commits any of the following, ये इसका heading है, and then the starting says supplies any goods or services or both without issue of any invoice in violation of the provision of this act or the rules made thereunder with the intent to evade tax. क्या ट्रांजेक्शन है? कच्चे में माल बेचना. क्यों? मैंने क्या किया? मैंने माल बेचा, मैंने सर्विसेज दी, लेकिन उसका मैंने इनवॉइस नहीं बनाया. ठीक है, अब इसको समझना पड़ेगा अपन को. तो एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. एवरी सिटी हैव वन फेमस कचौड़ी वाला और मे हैव वन फेमस ग्रोसरी स्टोर पर्सन. आप उनकी दुकान पे जाओगे, किराने का सामान हमारी भाषा में, आप उसकी दुकान पे जाओगे, वो क्या करेगा? आप उससे कहोगे भैया मुझे 5 पैकेट मैगी दे देना, 4 पैकेट बिस्किट दे देना, 2 आटा के पैकेट दे देना, 4 वो दे देना, 1000-1500 का बिल बनेगा. वो एक स्लिप पैड होगा, उस पर 1000-1500 का बिल बना के आपको दे देगा, पकड़ा देगा. तो अगर मैं मान के चलूं, ये तो ए सेक्शन तो सेटिस्फाई हो जाता है उस केस में. व्हाई? बिकॉज ये सप्लाई द गुड्स विदाउट मेकिंग एनी इनवॉइस. ये एक व्यू या एक एकेडमिक डिस्कशन आया, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं देख भाई, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते. इसके आखिरी में एक टर्म लिखा हुआ है विद द इंटेंशन टू एवेड टैक्स. उसकी इंटेंशन टैक्स एवेड करने की थी? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि उनका सीए ने ये कह रखा है कि भैया पूरे दिन का हिसाब बना के रख लेना, शाम को मेरा अकाउंटेंट आएगा, वो तुम्हारे बिल चढ़ा देगा जो भी आपने कच्ची पर्ची बना रखी होगी, और काम हो जाएगा. सो आई वुड से there need to be intention to evade tax. लेकिन जो मैंने कचौड़ी वाले का एग्जांपल लिया या फिर मैंने आपको ग्रोसरी का एग्जांपल दिया, you don't have an intention to evade tax. बट ये कहाँ पे होती है? ये होती है जब यूपी से जूता बसों में भर के, जो पैसेंजर बसेस होती है उनमें भर के नीचे जो उनकी जो डिक्की होती है वो अजमेर, जयपुर और अक्रॉस द कंट्री जाता है और वहां पे जाके बिकता है, क्योंकि वहां इनवॉइस नहीं बनता, वहां सिर्फ माल मूव होता है. So that is a transaction of what? That is a transaction where goods or services are being sold without issuing of any invoice. So क्या ये फेक इनवॉइसिंग है? नहीं, ये कोई फेक इनवॉइसिंग नहीं. ये सेक्शन कब लगता है? ये सेक्शन तब लगता है जब कोई भी आदमी बिना किताबों में ट्रांजेक्शन को चढ़ाए हुए टैक्स, बिना किताबों में चढ़ाए हुए गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर. ये सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग क्राइम है. अच्छा, एक 5 करोड़ की लिमिट है टैक्स एविजन की, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं अकेडमिकली ये चारों सेक्शन समझा दूंगा. Now the second one is, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक अनडिस्क्लोज सेल है, इसका मोस्ट कॉमन वे. ठीक है, ये मेरे लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बी और सी. बिकॉज फेक इनवॉइसिंग का जो कंसेप्ट है ये इनके आसपास घूमता है, या फिर मैं बोलूं अभी तक जितनी भी अरेस्ट के केसेस हमने डील किए 90 to 99% यही वाले होते हैं. It says that issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provision of this act or the rules made thereunder, leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax. This is B, but it has to be read with C. What it says, avails input tax credit using such invoice or bill referred to in clause B. To all the audience, I would request that you please read that what is appearing in your screen, and I would try to mingle upon this section or juggle with these sections by way of some examples. चालू करते हैं अपन. मैं ट्रेडर हूं, मैंने एक्स पर्सन से माल खरीदा. उस एक्स पर्सन ने कहा भाई मैं ब्रोकर हूं मार्केट में, मैं माल सप्लाई करता हूं, आपको चाहिए मैं माल दे दूंगा. अच्छा, ये मैं एग्जांपल्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेता हूं. कॉपर, ये जो मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूं ये हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होगा बिकॉज दिस इज इंडस्ट्री बेस्ड, लेकिन मैं एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाता हूं. एक काम होता है जिसे कहते हैं वायर ड्राइंग का. जो कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर्स होते हैं ना, जो कि अपने ये इलेक्ट्रिफिकेशन काम में आते हैं,
इनकी वायर रॉड्स बनती है, इनकी वायर्स बनती है, वायर ड्राइंग का काम होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको रॉ कॉपर चाहिए होता है, और उसको बाद आप मशीन में डालते हो, उसे पिघलाते हैं, और जितनी भी थिकनेस की आपको वायर चाहिए वो वायर बन जाती है। ये वन ऑफ द इंडस्ट्री। Someone is raising hand, so my request that I would take all them at the end. You can put up either you can type your queries there, or at the end if the time permits me, or the moderators will allow me for the same. So I am on this where I'm trying to say B and C. What I'm highlighting कि वायर ड्राइंग का एक मेटल इंडस्ट्री का काम का एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें होता क्या है, अगर आप जो बड़ी कंपनी है, जैसे वेदांता इज अ बिग कंपनी, यू अप्रोच वेदांता, तो वो जो आपको पर मेट्रिक टन माल है वो देंगे से 2,000 रुपए या 4,000 रुपए का, एक एग्जाम्पल है, 2,000 रुपए पर मेट्रिक टन आता है। ये जो ब्रोकर मार्केट में घूमते हैं, ये आपको माल दे देते हैं 1,800 रुपए टन मेट्रिक टन में, या 1,500 रुपए मेट्रिक टन में। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं टैक्स इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं उनसे माल निकालते हैं, उसको गलाते हैं, उसकी वायर रॉड बन जाती है, उसका एक वो बन जाता है, उसे कहते हैं इनगोट, एक इनगोट बन जाता है और वो सप्लाई करते हैं। अब होता क्या है वो समझते हैं अपन। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे माल दे दो, वो कहता है हाँ माल दे दूंगा। वो ब्रोकर है, वो कहता है ठीक है साहब, आपको कितना मेट्रिक चाहिए, इतना मेट्रिक टन ये भाव मिलेगा। उसने माल मेरे को बेटर दिया वेदांता से, मैंने उनसे डील कर ली, उसने मेरे यहाँ पे माल पहुंचाया। ऑब्वियसली मुझे पता है वो ब्रोकर है, तो वो इनवॉइस तो कहीं किसी पार्टी का लाता है, मैं डायरेक्टली उससे डीलिंग नहीं करता। लेकिन मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं ई वे बिल चेक कर लेता हूँ, मैं गुड्स चेक कर लेता हूँ, मैं जो लॉरी रिसिप्ट है वो रख लेता हूँ, और क्या कहते हैं, मेरी बुक से सारा मैं चेक से पेमेंट कर देता हूँ। एक दिन जीएसटी वाला आ जाता है, वो आते मेरे को ये बोलते हैं कि भाई आपने जो गुड्स लिए हैं वो आपने गड़बड़ लिए। क्या गड़बड़ लिए? ये कहने लगे जिसने आपको माल दिया है ना, उसने तो आपको गुड सप्लाई किया ही नहीं है, क्योंकि हमने उसके यहाँ जाके देखा, ये जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कैसी बातें कर रहे हो साहब, मेरे पास फोटो लगे हुए हैं, मेरे कैमरा में रिकॉर्डिंग है कि ये माल मेरे पास आया और इस पार्टी से आया है। बोलेंगे नहीं 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 आप चोर हो। क्या चोरी करी मैंने? देखिए माल तो आपने खरीदा है कबाड़ी वाले से आपके यहाँ लोकली, और आपने उसको इनवॉइस से कवर किया। मैंने कैसी बातें करते हो? नहीं नहीं यही है। तो मैंने कहा आपके पास बेसिस क्या? वो कहते हैं बेसिस हमारे पास ये है कि जिसने आपको माल सप्लाई किया हुआ है, जिस जीएसटीएन से आपने माल खरीदा, वो पार्टी गायब है। मैं हाथों हाथ उस ब्रोकर को फोन मिलाता हूँ, ब्रोकर फोन नहीं उठाता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ रेड हो चुके हैं मेरे यहाँ। और अब वो चालू होता है मेरे ऊपर हरेसमेंट और प्रेशर डाल। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज नॉट अ whimsical एग्जांपल और हाइपोथेटिक एग्जांपल, दीज आर द मैटर्स व्हिच आई एम डीलिंग फ्रॉम लास्ट 5 years विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन। वो बिजनेसमैन को वो सी के अंदर कहते हैं, डायरेक्टली दे इन्वोक सी, और वो क्या कहते हैं, दैट ही हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवॉइस बिल रेफर टू इन क्लॉज बी। अच्छा बी का इनवॉइस क्या है? बी इज इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। होता क्या है, वो जो ब्रोकर है ना, वो ब्रोकर जो है वो ये काम करता है, वो मार्केट में माल तो खरीदता है कबाड़ी वाले से, उसको लोड करता है, लेकिन क्योंकि जिसको वो बेचा वो आदमी बड़ा अच्छा है, उसने कहा भैया मैं तो पक्के में ही माल खरीदूंगा, मैं तो कच्चे में माल खरीदता ही नहीं हूँ। तो कहता है नहीं साहब आप चिंता मत करो, आपके पास पक्के का प्रॉपर बिल आएगा, आपकी 2A में एंट्री आएगी, सब कुछ होगा। तो कहता है ठीक है, फिर तो मैं क्या करूं, 2A में चेक करूंगा, मैं अच्छा व्यापारी हूं, मैंने तो देख लिया 2A में एंट्री आ गई, चेक से पेमेंट कर दिया, ई वे बिल बकायदा बन के आ गया, ट्रांसपोर्ट नंबर चढ़ा हुआ है, इतना सब कुछ, इसके अलावा क्या चेक करूं? लेकिन उस ब्रोकर ने क्या किया हुआ होता है, या फिर मैं बोलूं वो ब्रोकर भी बढ़िया आदमी है, वो ब्रोकर ने भी जिससे माल बुक किया होता है उसने क्या किया हुआ होता है, वो एक लेयर पीछे भी जा सकते हैं इसमें। उसने कबाड़ी वाले से माल खरीदा हुआ होता है, स्क्रैप डीलर से, उसके इनगोट्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन उसको कवर कर रखा होता है बाय वे ऑफ अ इनवॉइस। और ये जो इनवॉइस होता है, ये जो उसने सेकंड पार्टी से खरीदा होता है, उसने कैसे बनाया हुआ होता है, ये समझा होता है। बहुत आसान था स्टार्टिंग में, 17, 18, 18, 19 में बहुत आसान था, अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे इनको पता लगा, इन्होंने भी टैप करना चालू किया। ये क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? दे फाइंड आउट सम XYZ PQR,
किसी एजेंसी के पास गए, उससे कहा कि भैया तेरे पास रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तेरे पास लोगों के नाम पते होंगे, तो मुझे जरा दे दे। अच्छा, कई बार क्या होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है, और आपको बस एक ऐसा आदमी मिलना चाहिए जिसको आप 5,000 रुपये महीने दे सको। वो कहता है भैया जहाँ साइन कराने हैं मेरे से करा लो। वो 5,000 के लालच में क्या करता है, वो कहता है कि ये मेरा आधार कार्ड पकड़ो। आधार कार्ड और उस आदमी को ले जाके किसी बैंक में बैंक खाता खुलवाना पड़ता है, एक पैन कार्ड मिल जाता है, और वो ले जाके वो क्या कहता है कि अच्छा ये जीएसटीएन पे ये एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। जो एड्रेस दिया जाता है वो किसी एक्सवाइजेड जगह का दे दिया जाता है, रेंडेड बन जाती है, और एक परफेक्ट जीएसटीएन खड़ा हो जाता है। और उस जीएसटीएन का इस्तेमाल किस लिए होता है? फेक आईटीसी क्रिएट करने में। क्या होती है फेक आईटीसी? टू ऑल ऑफ यू who those who have once filed the GSTR 3B return, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। जीएसटीआर 2A से मैच करना ये तो बहुत बाद में आया था, ठीक है, या 2B से मैच करना था। अच्छा, 2A TB से मैच भी नहीं करो तो क्या किसी ने आपको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है क्या? अब तो फिर भी वो रेड फ्लैग ब्लू फ्लैग थोड़ा बहुत देने लग गए। बट अगर मैं बात करूं 17, 18, 18, 19, 19, 20 में जब वो रिटर्न बढ़ते थे, तो जीएसटीआर 3B में 3 कॉलम आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आईटीसी लेने के लिए। उसमें जितना अमाउंट चाहूं मैं पंच कर सकता हूँ, वहां कोई मुझे चेक करता है क्या? और एक बार वो अमाउंट पंच हो गया, वो जो फेक पर्सन है जिसके नाम से जीएसटी आईडी क्रिएट हुई है, वो तो एक तरीके से बैंक के अंदर बैलेंस जमा हो गया। और उस ट्रांजिशन को, उस जीएसटीएन के इनवॉइस को यूज करके वो जो ब्रोकर है उसने कच्चे माल को कवर किया, और जो एक अच्छा बिजनेसमैन है उसको वो माल पकड़ा दिया। एंड इन दिस वे द बी हैज बीन डन बाय समवन एल्स। हाउएवर, ये बी वाले हमेशा गायब मिलते हैं। जब डिपार्टमेंट आता है तो डिपार्टमेंट हमेशा सी वाले के पास आता है। क्यों? ये जितनी भी कहानी है, ये करता कौन बिजनेसमैन है जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, या फिर जो अच्छा बिजनेस कर रहा होता है। उसको माल चाहिए, माल कहाँ से मिलेगा? पक्की जगह से बहुत लेट माल आता है, कच्ची जगह से सस्ते में माल आता है, खरीदते हैं, लेकिन उसको कवर करने के लिए इन्वॉइस चाहिए ही चाहिए होता है। दिस इज हाउ द बिजनेस इज डन इन दिस कंट्री। If you want to earn a margin over and above what your competitor is earning, try to do some kind of modification in the document, and you might be able to earn a more amount of GP. क्यों? जो पक्के में माल खरीदता है वो वेदांता का वेट करेगा, 2,000 में खरीदेगा, 2,200 में बेचेगा। इन भाई साहब ने 1,800 का माल खरीदा, 2,200 में बेचा, 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 200 रुपए के जीपी को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे आदमी से जिसका उन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया और माल खरीद लिया। बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई सी, और बी उस पर्सन ने किया था। जो बी वाले होते हैं वो कभी डिपार्टमेंट को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? वो तो गायब ही रहते हैं। लेकिन जो जीएसटीएन नेटवर्क है जो मैंने अभी आपको बताया, उससे ये जरूर पता लगता है कि इसने जो क्रेडिट पास ऑन किया या लिया वो किस पर्टिकुलर जीएसटीएन से लिया। और फाइनली वो जाके एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो शहर का बड़ा आदमी होता है, क्योंकि वो आदमी कमा के एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका हुआ होता है जहाँ पे ही इज अ गुड बिजनेसमैन विद अ रेपुटेशन, क्योंकि तभी उसने कमाया है। और उसको जाके पकड़ते हैं और फिर उसको धमकाते कि देख भाई तूने सी वायलेट कर लिया है। तो कहेगा साहब मैंने कैसे वायलेट किया? कहते वो बाद में निकालेंगे, हमारे पास ये प्रूफ है कि तू, तेरे पास जिसका गुड्स आया वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, हमने वहां पे सर्वे किया था। तो या तो तुम मुझे प्री डिपॉजिट अभी के अभी कुछ अमाउंट जमा कराओ, नहीं है तो बिहाइंड द बार्स जाओ। बिहाइंड द बार्स मतलब यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड, ट्रायल चलेगी, लेकिन एक बार आप मेरे संग चल लो, क्योंकि आपने इन लोगों से जो क्रेडिट लिया है उसका अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो मैंने बिजनेसमैन बोली है, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जिनको अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने जो माल खरीदा है ये बोगस है। बिजनेसमैन तो यहां तक जाता है कि वो कच्चे में माल खुद खरीदता है और फिर बिल कहीं और से अरेंज करता है, क्योंकि उसको अपनी बुक्स को सजा के रखना है। क्योंकि जो उसका ऑडिटर है वो ईयर एंड में आके बोलेगा ये क्या कर रखा है, माल तो इतना सारा है, इसके गुड्स बिल कहाँ पे? तो बोलेगा अच्छा नहीं नहीं मैं बिल सब अरेंज कर देता हूँ, सारे बिल अरेंज कर देगा और दिखा देगा कि देखो ये हुआ। तो दैट इन्वोक्स सी, व्हाई? बिकॉज ही हैज purchase goods from somewhere else, and the invoices which on the basis of which he's showing his stock are basically invoices of the category of B. ये मैंने आपको एक तरीका बताया। इसके अलावा भी 2-3 तरीके से चोरी करते हैं, या चोरी करने का जो तरीका होता है वो समझाता हूँ। डिस्काउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, ये एक फ्लो डायग्राम है, समवन इंटरेस्टेड कैन हैव अ लुक इनटू इट। मैं एक बार उसको क्विकली समझा देता हूँ। एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है? मैं मान लीजिए जूतों का व्यापारी हूं, मैंने एक कंज्यूमर जो मेरी दुकान पे आया उसको एक जूता बेचा।
जूते के ऊपर 1000 से ज्यादा, पहले वाली सारी कहानी थी, अभी 12% जीएसटी अगर अपन एक बार एक एवरेज पकड़ लेते हैं, रेडीमेड गारमेंट जो भी एग्जांपल लेना है, कि 12% जीएसटी लगता है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार आप, मैं जूता खरीदने गया, मैंने कहा यार बिना बिल के देगा? कहते हाँ दे दूंगा साहब। कहते बिल के संग लोगे तो 1000 रुपये प्लस 12% जीएसटी 1200 का जूता, और आई एम जस्ट पुटिंग अप सम राउंडिंग ऑफ फिगर्स, सो इतने का जूता, और अगर आप बिल नहीं लेते हो तो ये जूता 1100 रुपये का हो जाएगा। मैं कहा 1100 ले भाई बिना बिल के, मेरे को क्या करना है बिल का, मैं कंज्यूमर हूँ, ले पकड़ 1100, तू फ्री हो जा। ऐसे सुबह से शाम उसने 10 जूते बेचे जिन पे बिल नहीं दिया, महीने के 300 जूते हो जाते हैं। अब हुआ ये कि महीने के एंड में एक व्यापारी है, उसने कच्चे में कहीं से जूते खरीदे थे और उन्होंने कच्चे में ही बेच दिया था। वो व्यापारी मेरे जिस व्यापारी के पास पहुंचा जिससे मैंने कच्चे में जूते लिए, मैंने बिना बिल के जूते लिए थे, उसको बोला यार तेरे पास स्टॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसने कहा यार स्टॉक तो बुक्स में दिख रहा है, मैं तो पक्के में माल लाया था, लेकिन मेरे से तो कंज्यूमर ले गया कच्चे में। यार तेरे पास आईटीसी रखा होगा। आईटीसी रखा होगा मतलब? भाई उसने जो परचेज करी उस पर तो टैक्स दिया ही ना, लेकिन फर्दर जब उसने बेचा तो उस पर उसने सामने वाले से 1100 रुपये, मतलब जितना भी डिस्काउंट देना था सामने वाले को देके कच्चे में माल तो निकाल दिया, लेकिन दुकान पे स्टॉक नहीं है। अच्छा, जो जिसने कच्चे में बेचा था, मतलब जिससे मैं माल खरीद के आया था, उसके सीए ने उसको परेशान कर रखा है। वो कहता है यार ये क्या कर रखा है, आपके बुक्स में जितना स्टॉक है उतना तो आपकी दुकान में ही नहीं है, ये क्या कर रखा है, इसका कुछ करो। तो वो जो दूसरा व्यापारी है जिसने कच्चे में खरीद के कच्चे में बेचा था, उसको लोन लेना था या फिर उसको अपनी बुक्स ठीक करनी थी, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ऐसा कर कि तू 50 जूतों का इनवॉइस मेरे को दे दे। उसने कहा ठीक है, लोग क्या करना है, कहने लगे इनवॉइस बना दे, 50 शूज सप्लाइड एट XYZ रेट, इतना जीएसटी, और तेरे को जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है, तेरे पास आईटीसी रखा है, और वो जीएसटी तो मुझे पास ऑन कर दे। नाउ वेदर माय क्वेश्चन इज, BNC हैज बीन इन्वोक्ड इन द एग्जांपल व्हिच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ये मैं सेकंड सेट ऑफ तरीका बता रहा हूँ चोरी करने का, या फिर मैं यूं बोलूं सेकंड तरीका ये बता रहा हूँ जैसे बिजनेस होता है। आई एम ऑफ अ कॉन्क्रीट व्यू कि बी और सी दोनों इन्वोक होते हैं, ये एग्जांपल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, बिकॉज दैट्स हाउ द मार्केट मैनेजेस द शो। और इसमें कहीं ना कहीं कौन कल्प्रिट है, कल्प्रिट वो कंज्यूमर है या फिर मैं हूं। मैंने अपना एग्जांपल लिया था जिसने एक लालच के तौर पे क्या किया, जो माल था वो कंज्यूमर की तरह खरीदा, लेकिन उसका बिल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपए का फायदा कमाना था। एंड इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड, अब मैंने एक चेन को प्रमोट कर दिया जिससे ये टैक्सेशन घूमता रहेगा। देखिए होता क्या है, इस एग्जांपल को थोड़ा और बारीकी से समझाता हूँ। टैक्सेस नीड टू बी कंक्लूडेड एट व्हाट स्टेज? एट द स्टेज ऑफ कंजम्पशन। बट इफ दोस टैक्सेस आर नॉट कंक्लूडेड एंड द गुड्स हैव बीन कंज्यूम्ड, सो दैट टैक्स ट्रैवल्स, और उस टैक्स को फिर अब आप ट्रैवल कराते हो, और अगर आप ट्रैवल, जितनी बार वो ट्रैवल हो रहा है उतनी बार गवर्नमेंट को चूना लग रहा है। दिस इज हाउ द सिस्टम इज। द पॉइंट इज, आप ये कहेंगे कि साहब इसमें है क्या, कई कई जनों ने मुझसे एग्जांपल दिया, उसमें उसने दूसरे वाले को जब दिया तो क्या हुआ, उसने टैक्स कलेक्ट किया और आईटीसी को यूज कर लिया? नो, टैक्स की चेन खत्म हो जानी थी कंज्यूमर पे, वो खत्म नहीं हुई और वो आगे चल गई, तो भी गवर्नमेंट को चूना लगता है। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेक केयर इन बीएनसी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जांपल। एक और ट्रांजेक्शन होता है सर्कुलर ट्रेडिंग, क्विकली बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई गेस मेरे पास बहुत कुछ है कवर करने को एंड आई एम ऑलरेडी 5:15 पे। सर्कुलर ट्रेडिंग होता है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है, मैं एक पर्सन हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, लेने के बाद उनको कमिटमेंट दिया कि मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट आप इतनी बना दो, इतने स्टॉक के ऊपर, इतने टर्नओवर के ऊपर। हुआ ये कि 2 साल तो बहुत बढ़िया रहा, तीसरे साल ना मेरी सेल हुई या फिर मेरी कोई स्लगिश पीरियड आया, मेरी सेल हो गई कम। बैंक आ गया, बैंक ने कहा भैया वर्किंग कैपिटल इतनी अलाउड होगी नहीं क्योंकि आपका टर्नओवर तो हो गया कम। मैं तो पूरा खेलता ही वर्किंग कैपिटल पे था जो बैंक से मिली हुई थी, तो अब मेरे को सूझा यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं अपन टर्नओवर बढ़ाते हैं। अच्छा टर्नओवर बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, सेल तो हुई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जानकारों के नाम से 4-5 फर्में बना देता हूँ, मैं उनको बेचूंगा, वो मेरे दूसरे जानकार को बेचेंगे, फिर तीसरे जानकार को बेचेंगे, और फिर वापस मेरे पास गुड्स आएगा, फिर मैं वापस बेचूंगा। ऐसे मैं एक साइकिल घुमाता रहूंगा। इस साइकिल में डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स मिलता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन स्टिल ये बीओसी में कवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में गुड सप्लाई नहीं होते,
इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनवॉइसेस सब इधर से आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिकल तरीका होता है। आपको बुक्स को विंडो ड्रेस करना है तो, आपको लिस्टेड कंपनी का टर्नओवर अच्छा दिखाना है तो, लेकिन क्या उसका जीएसटी प्रॉब्लम आ सकती है? आंसर इज यस, आ सकती है ऑन अकाउंट ऑफ बीएनसी क्लॉज। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई टेल यू, अलवर कमिश्नरेट के अंदर राइट नाउ वी आर लिटिगेटिंग वन मैटर, अभी वो पेंडिंग है काफी, बट दिस हैपेंस बिकॉज वहां पे एक लिस्टेड कंपनी के बुक्स फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट अभी सेबी आया कि नहीं आया, उससे पहले ये कूद गए, और ये कूद गए तो सेबी और ईडी और बैंक्स सब साथ में उसके पीछे फॉलो अप करते हुए आ गए, बिकॉज एक्चुअल में द ट्रांजेक्शन वाज नॉट विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड जीएसटी बट विद द इंटेंट टू फैब्रिकेट द बुक्स, बट ये ट्रांजेक्शन निकल के आ गया। नाउ वंस गिवन यू दिस एग्जांपल, नाउ आई एम ऑन लास्ट क्लॉज डी, which talks about collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payments becomes due। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को क्लॉज लगता है। अगर अपन बात करें, मैं इसको दो एग्जांपल से समझाऊंगा अलग अलग। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक ह्यूज कैपिटल एक्सपेंशन किया, और कैपिटल एक्सपेंशन इस तरीके का किया कि मेरे पास आने वाले 12 महीने तक का क्रेडिट अवेलेबल। मैं जो अकाउंटेंट था उसने कहा करना ही क्या है साहब, आपकी रिटर्न ही तो भरनी है। तो 4-6 महीने तक रिटर्न तो भरी नहीं उसने। क्यों नहीं भरी? उसने कहा साहब क्रेडिट से सेट ऑफ ही करना था, कर देंगे, क्या जल्दबाजी। या फिर ये हुआ कि मेरे को लगा कि यार मैंने लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने माल बेचा है, टैक्स तो मुझे मिल गया है, यार इस महीने पैसे कम है थोड़े से, तो ऐसा करता हूँ रिटर्न थोड़ी सी आगे बढ़ा देता हूँ। कितनी बढ़ाता हूँ? 2-4 महीने तक देख लेंगे जो होगा। मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा इंटरेस्ट लगेगा और लेट फीस लगेगी, क्योंकि मैं तो अकाउंटेंट था। उसने ये डी क्लॉज नहीं पढ़ा था। द पॉइंट इज, if a person doesn't file his return after collecting taxes, this D clause gets subtracted। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि मेरे पास आईटीसी रखा हुआ था, मैंने रिटर्न नहीं भरी, तो ये क्लॉज इन्वॉक हो गया। मैंने लोगों से पैसा कलेक्ट कर लिया, मेरे को उस पैसे को यूज करने को चाहिए था, तो मैंने उसको यूज किया और रिटर्न नहीं भरी, तो ये क्लॉज अट्रैक्ट हो गया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्लॉज इसलिए आया ही नहीं। आई टेल यू नाउ फर्स्ट व्हाई दिस क्लॉज इन द लॉ बुक्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब होटल सेक्टर क्लासिकल एग्जांपल है डी का। बताता हूं कैसे। ये क्या करते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे सीधा 18% जीएसटी है। ये स्टूडेंट्स को इनवॉइसेस देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू एनी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं आप एडवाइस करते हो, बट ये केसेस मैंने सर्विस टैक्स के टाइम से डील किए। और अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से बुक्स में 900 बच्चे या 800 बच्चे दिखाए जाते हैं। 100 बच्चों के इनवॉइसेस को फाड़ दिया जाता है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? उस पेरेंट के हाथ में तो जो इनवॉइस गया हुआ है उस पर 18% जीएसटी दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट ने कहा कि भैया मैं लाख रुपए के ऊपर 18% तो तब दूंगा जब आप मेरे को इनवॉइस दोगे। उसने हाँ इनवॉइस लो। लेकिन जब डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करने की बात आई तो वो 100 इनवॉइसेस फाड़ दिए। और ये बहुत इजीली हो सकता है सर्विस सेक्टर में। क्यों? सर्विस की खासियत है, उसकी कभी ट्रेल नहीं बनती। मैं अभी आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, उसकी क्या ट्रेल बनेगी? अभी तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग इन्होंने कर लिया, अगर ये नहीं करते उसकी कोई ट्रेल नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पे 130 पार्टिसिपेंट्स जो ज्वाइन करे हुए हैं, दे ऑल आर लिस्टिंग टू मी और नॉट, इसकी भी कोई ट्रेल नहीं बन सकती। द सेम वे इट गोज ऑन कि अगर मैं बात करूं कि 130 बच्चे क्लास में थे कि नहीं थे, इसको पता करने का तरीका गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। क्योंकि गुड्स के केस में बड़ा इजी होता है। गुड्स के केस में तो गुड्स ट्रैवल करते हैं, तो आप क्या करते हो, आप ईवे बिल से पकड़ लेते हो, आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा, आप उससे पकड़ लोगे कि हाँ ये माल आया। सर्विसेज के केस में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे अगर आप जाएंगे तो पहला सवाल आपसे पूछेंगे, छोटे होटल्स का खासकर, कैश या फिर चेक। वो ये क्यों पूछते हैं कई बार? इसलिए पूछते हैं कि उनका कैश का रजिस्टर अलग है, चेक का रजिस्टर अलग है। वो क्यों अलग अलग है? भाई कैश जिससे लिया उसकी एंट्री हमने विजिटर रजिस्टर में कर दी, और बाद में उसमें से जितने इनवॉइसेस काटने होंगे, फाटने होंगे, छाड़ने होंगे, वो छाड़ देंगे, क्योंकि कैश वाले का तो कोई ट्रेल है ही नहीं। अगर वो चेक से पैसा दे दे, बैंक में चला जाए, तो उसका ट्रेल बन जाता है, लेकिन जिसने कैश पैसा दिया उसको तो आप हटा दो, किस्सा खत्म।
क्योंकि वहां पे वो कंज्यूमर जो है, वो कंज्यूमर जाके उसका आईटीसी तो लेने वाला नहीं है, और सीधा सीधा शुद्ध 18% का फायदा है. सो इफ दैट हैपेंस एंड द डिपार्टमेंट फाइंड्स आउट, the D clause gets in. This D clause is for that purpose. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो मैंने एग्जांपल्स आपको भी दोनों तीनों दिए, इन दोनों तीनों में लगता है, बट बनाने का रीजन था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला. So once given you this examples, this thought process, I understand I have taken care of my first part of the presentation, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो अरेस्ट प्रोविजंस है, अब होता क्या है, ये जो मैंने आपको ABCD बताया, इन चारों के अंदर टैक्स एविजन अगर 5 करोड़ के अबव का है तो ये नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है. नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि आज ऑफिसर को किसी की परमिशन, कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अरेस्ट कर सकता है और वो कोर्ट के आगे प्रेजेंट करेगा, और कोर्ट आपको बेल ग्रांट करे नहीं, उसका करे या नहीं करे उसका डिस्क्रिप्शन, और एक बार आपको बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाता है. नॉर्मली ये जो बेल्स है ये हाईकोर्ट लेवल पे एंटरटेन होती हैं, और हाईकोर्ट आपको बेल ग्रांट करता है, तब तक एक सब्सटेंशियल पीरियड निकलता है, एंड दैट पर्सन हैव टू बिहाइंड द बार्स. He is not a culprit, mind it. He is only a person in whose there is apprehension that he has done some sort of fraud, and that there is a trial process which still has to go on, but there is an apprehension that why he has been arrested. जब ये 5 करोड़ से कम होता है तो ये अवेलेबल होता है. अवेलेबल का मतलब ये होता है कि आप पे केस तो चल रहा है, आप पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन आप प्रॉमिस करोगे कि आप हमको इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत नहीं दोगे, इसलिए आपको हम बेल ग्रांट कर देते हैं, और अगर आपने उस बेल बॉन्ड को जंप किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे. नॉर्मली ये 5 करोड़ से कम वालों में कुछ करते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इनको लगता है क्या परेशान करना है इसको, थोड़े बड़े वाले असेसीज को पकड़ते हैं. एंड दोस ऑल आर थिंग्स व्हिच कम्स इनटू पिक्चर. अब इन सब के बीच में दिक्कत जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन वाली बोल रहा था, वो कहाँ पे आ जाती है? वो ये आ जाती है कि कई बार ये जो इशूज एनी इनवॉइस है ना, इसमें अगर इनवॉइस बुक सीए के ऑफिस में मिल गई, अगर इनवॉइस बुक पे इनवॉइसेस जो बन रहे हैं उस पे सीए के ऑफिस वाले अकाउंटेंट ने गलती से सिग्नेचर कर दिए, और अकाउंटेंट से ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि हाँ साहब, सीए साहब के कहने पे मैंने इस बुक पे साइन किया था, तो बी की तरफ उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे से दैट पर्सन हैज इश्यूज एनी इनवॉइस. क्योंकि जब मैंने सीए इसमें अरेस्ट हुए, जब मैंने समझने की कोशिश करी, तो मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने कहा यार, सीए ने क्या किया जिसने उसकी खाली रिटर्न भरी? अब होता क्या है, देयर आर मेनी ऑफ माय यंग प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो कहते हैं कि हम तो आपको पूरा पैकेज में काम कर देंगे, बिना ये समझे कि जब वो आपसे पैकेज में काम करा रहा है तो क्या उसकी हमने एक बेसिक केवाईसी करी है. बेसिक केवाईसी मतलब मैंने वो जो बताए थे ना, जो वो अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ के लाते हैं और उनकी रिटर्न्स बनाने का, उनके नाम पे जीएसटी बनाने का काम करते हैं. एक्चुअली वो सारे कागज जो होते हैं वो कई बार वो लाके देता है, और उसको जो डेटा पंचिंग होती है पोर्टल पे, वो कौन करते हैं? वो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स कर देते हैं. और उस दौरान वो कई बार ये भी गलती कर देते हैं कि अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, जो एक प्रॉब्लम का सबब बन जाता है. क्योंकि डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल आईडी से, वो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर की निकलती है, और फिर हरेसमेंट चालू होता है, और फिर वो स्टोरी कहाँ जाके एंड होगी, वी डोंट नो. Many of those cases जहां मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स, प्रोफेशनल फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट किया इन कोर्ट्स एंड बेल्ड देम आउट, वहां मुझे समझ में आता है यस, स्टिल यार, दैट पर्सन हैज कैरिड आउट हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, बट द पॉइंट इज दैट पर्सन व्हाइल कैरिंग आउट हिज प्रोफेशनल ड्यूटी मस्ट टेक केयर कि वो बेसिक केवाईसी फॉलो करे, और कुछ भी ऐसा नहीं करे जिसकी वजह से दोबारा उसको प्रॉब्लम आए. एक बार एक बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है जिस क्लाइंट का काम आपने उठाया है उसका. So to all my friends, please be cautious who are listening to this, that don't just go on starting कि यार अच्छा होता क्या है, वो आदमी लालच ऐसा देता है कि मैं आपको 30 रिटर्न दे दूंगा, और नॉर्मली आप 5,000 लेते हो रजिस्ट्रेशन के, आप मेरे से 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए ले लेना. एक बार मेरे एक प्रोफेशनल फ्रेंड ने इतनी बेवकूफी करी, जो विद गॉड ग्रेस जितनी ज्यादा ट्रेस नहीं हुई, उसने तो उठा के अपने किसी नोन का घर का पता भी बता दिया, अच्छा इस पते पे आप रेंडिट बना देना. और गलती से जब उसके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो उन सीए साहब ने बोला था, इसलिए मैंने ये रेंडिट कर लिया. प्लीज बी वेरी कॉशियस. We need to understand what is your professional responsibility and whether you are crossing that fine line because of which the problem may come on you, or the I should say जो कहते हैं ना कि छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए.
वो फाइन लाइन का डिफरेंस आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है while you are carrying out your professional duties. Now, once I have concluded my first part of giving you a brief background, what this all arrest provisions and arrest litigation happens upon, now I want to take upon some of very prominent judgments which has come in last 5 years. If time permits me, I may be able to cover all of them. Or what I will do, I will share this PPT in the chat box also, and also with the panel of the program organizers, so that if want they can circulate it. With this, I have still 35 minutes, or if the panelist permits me, last 5-7 minutes I want to reserve on some Q&A if there are any, and I request that kindly put them on the chat box if you have. Let me start with this part of my presentation. Very interesting 2022 judgment, and Munjal Manish Bhai Bhatt versus Union of India. It's relating to real estate sector, and I tell you very frankly, Gujarat High Court is one of the high court which has really given us some very beautiful judgments in terms of GST law. So to start with, ये मैटर कुछ इस तरीके का हुआ कि एक बड़े ही सिंपल कंसेप्ट को जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने तरीके से कॉम्प्लिकेट किया, तो एक इनोवेटिव तरीका निकाला एक पर्सन ने एंड अप्रोच द हाई कोर्ट, सो क्रैशिंग डाउन सर्टेन प्रोविजन, द हाई कोर्ट हैज क्रैश डाउन दैट. देखिए क्या होता है, हर स्टेट के रियल एस्टेट की बात करते हैं, जो भी शहर की प्रोमिनेंट जगह होगी वहां पे फ्लैट का भाव ज्यादा होता है, और जब वो आउटस्कर्ट्स में होगा फ्लैट का भाव कम होता है. एक सिंपल फ्लैट की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एग्जैक्ट सेम होने के बाद भी फ्लैट के भाव में डिफरेंस होता है. क्यों होता है? वो रीजन होता है प्रोमिनेंट लोकेशन का. और प्रोमिनेंट लोकेशन किससे लिंक्ड होती है? लैंड से, जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बनने वाला है. द पॉइंट इज, अगर हम जयपुर की बात करें, सी स्कीम एज अ प्रोमिनेंट एरिया एंड से सीतापुरा और आउटस्कर्ट्स आर अ लेस प्रोमिनेंट एरिया, दैट इज द हार्ट ऑफ द सिटी. वहां पे एक 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK जो मिलेगा वो मिलेगा सी स्कीम में से अराउंड 2 करोड़ का. 1600 स्क्वायर फीट का सीतापुरा में मिलेगा से 70 लाख का. ये डिफरेंस सेम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आया लैंड की वजह से. अब सवाल ये आता है, जब आप 1/3 डिडक्शन की बात करते हैं, कहां पे? जहां पे कंसिडरेशन चार्ज होता है आइडेंटिफाइंग सेपरेटली. ठीक है, दो तरीके के ट्रांजेक्शन पे डिस्कस करेंगे, जहां सेपरेटली होता है, जहां सेपरेटली नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है इस जजमेंट के अंदर. क्योंकि इसके फैक्ट तो ऐसे थे कि पार्टीज ने आइडेंटिफाई किया था कि लैंड के इतना, बिल्डिंग का इतना, जैसे विलास के केस में होता है. हुआ क्या इस केस के अंदर? एक विला बना, विला के केस में ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुई से 70 लाख रुपीस. उसने कहा 30 लाख की तो 55 लाख की जमीन है, और बचे हुए 60-70 नहीं 45 लाख की तो लैंड की कॉस्ट है, और अराउंड दिस बचे हुए 25 लाख इज विद रिस्पेक्ट टू द लैंड पोर्शन. अच्छा, चलो ठीक है. तो बात यह है कि भैया आप ऐसा करो, लैंड पोर्शन पे तो जीएसटी है नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सिर्फ क्या करो, 25 लाख पे 18% जीएसटी लो और फिनिश करो. ठीक है यार, ऐसी क्या बात होगी भैया, ऐसे नहीं हो सकता. मेरे सीए साहब ने मुझे ये समझाया है कि आप 45 आप इनका जोड़ लगाएंगे, और उस पे 1/3 डिडक्शन देने का मतलब ये है कि 70 का 1/3 कर दो, या फिर आप रेट जो है वो 12 की जगह 8 कर दो, या फिर 5 जो अपनी 7.5 की उसकी 5 कर दो, या 3 की 1 कर दो, डिपेंडिंग अपॉन अफोर्डेबल हाउसिंग या रेगुलर हाउसिंग है. मैं तो इतना ही समझता हूँ, तो मैं तो आपको यही कर के दे सकता हूँ. उसने कहा नहीं साहब, ऐसे कैसे? अपने बीच में ट्रांजेक्शन ये हुई है कि लैंड के पेटे इतना दे रहा हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्शन के पेटे इतना दे रहा हूँ, तो आप तो मेरा जो है लैंड वाली तो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, क्योंकि आप मुझे अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट राइट इन अ बंगलो दे रहे हो, जो उसकी जो लैंड है वो आपने मुझे बेच दी बाय वे ऑफ अ रजिस्ट्री, बाकी जो है वो आपने कंस्ट्रक्शन के पेटे लिया, तो कंस्ट्रक्शन पे 18% जीएसटी लगा दो. ये डिस्कशन चालू हुआ. नाउ ही रेफर्ड टू a particular entry number 3 of notification 11/2017, and then they had a paragraph number 2 of that notification. और उस नोटिफिकेशन के पैराग्राफ नंबर 2 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है कि आपको 1/3 डिडक्शन मिलेगी लैंड वैल्यू की
on account of whenever you are selling a flat. हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाके किन किन ग्राउंड पे चैलेंज किया ये समझा था। उन्होंने कहा देखिए आप ही ने एक लॉ बनाया है जिसके शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है सेल ऑफ लैंड इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेकंड, आपने ये बताया है सेक्शन 15 के अंदर जो उसके वैल्यूएशन के लिए आप क्या ले सकते हो, ये तो है ही नहीं कि आप उसके अंदर लैंड वैल्यू इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया ना कि लैंड की वैल्यू कितनी है और कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कितनी है। तो आप तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू पे लो। आप ये क्या कर रहे हो, पहले लैंड भी जोड़ दो कंस्ट्रक्शन भी जोड़ दो, उनका जोड़ लगा के 1/3 अबेटमेंट दे दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। So this notification is not going in line with section 15. That was the technical argument. So as to declare that particular condition on explanation of notification number 11/2020 as ultra virus to the act. ये बैकग्राउंड के संग उन्होंने सर्विस टैक्स डिजाइन का भी रेफरेंस दिया। एक सुरेश बंसल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जजमेंट है। उन्होंने कहा वहां पे तो बता रखा है कि अगर हमको अलग अलग वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो ऐसे कर लो। तो अगर वहां पे बता रखा है और आपने वो मैकेनिज्म हमको दे दिया तो उस ग्राउंड पे हमको रिलीफ मिल जानी चाहिए। अब कंसिडरिंग दैट हाईकोर्ट ने अपने व्यू दिया। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जहां पे लैंड का वैल्यू आइडेंटिफाइड है और आपने अपने शेड्यूल 3 के अंदर ये कह रखा है कि लैंड पे टैक्स नहीं लगेगा, तो आप ये डीमिंग प्रोविजन लाते हो और इनको आपस में क्लब मैंडेटरी करा के और 1/3 वैल्यू पे ही आप टैक्स दिलाओगे। इसमें आपने इनडायरेक्टली क्या किया, लैंड पे भी टैक्स ले लिया, विच इज नॉट परमिटेड। If there is a transaction where effectively the value can be separately identified between the parties, so they should go with that value. Your 1/3 value is only applicable in those cases where it is not possible to ascertain the value of land component. वहां बिल्कुल ठीक है, वहां आपने आपके पास पावर है, क्योंकि सेक्शन 15 के अंदर ये कह रखा है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू वो होगी जो पार्टीज के बीच में अग्रीड है। और अगर वो अग्रीड वैल्यू फेल हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, रूल्स नोटिफाई कर सकते हो या आप नोटिफाई कर सकते हो उसका वैल्यूएशन का मैकेनिज्म, और जहां कंबाइन वैल्यू वहां आपने नोटिफाई कर दी, वहां तक ठीक है। सो इन लाइट ऑफ दैट 1/3 इज ओके, बट वेयर देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन वहां ये पॉसिबल नहीं है। एंड आई टेल यू, ये पूरा मैथमेटिक्स चेंज कर सकता है ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, सेम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हार्ट ऑफ द सिटी 2 करोड़ का बदला, सेम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आउटस्कर्ट में 70 लाख का बदला। वो होता क्यों है भाई, नीचे जमीन की वैल्यू है, लोकेलिटी की वैल्यू है, और अगर उस पर आप किसी भी तरीके से जो टैक्स रेट है वो बचा सकते हैं, मतलब आप ये करवा सकते हैं कि उस पर 5% टैक्स नहीं लगे लैंड वैल्यू पे, तो गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस फॉर द असेसी। जस्ट ट्राई टू लुक आउट। अभी ये लॉ इवॉल्विंग है, इम्प्लीमेंटेशन में रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी स्टडी कर रही है, बट आई टेल यू दिस गिव्स अस कि जीएसटी कभी भी सेटल नहीं हो सकता। मतलब 5 साल बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन पे जो रियल एस्टेट क्लाइंट्स को डील करते होंगे वो ऑलरेडी टैक्स ऐसे ही दिला चुके होंगे कि भैया कितने का भी बंगला है 1/3 करके छुट्टी करो। लेकिन ये जजमेंट आया है और अभी इट हैज टू सी स्टिल द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसा जजमेंट अगर ये इंप्लीमेंट होता है अक्रॉस द कंट्री, सो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। एंड ऑब्वियसली जब ऐसा कभी भी जजमेंट आता है, डिपार्टमेंट challenges it to the Supreme Court. Why? Because they wanted to have a final authority on it. And if Supreme Court confirms it, that's a great way of structuring a real estate transaction. जैसे आप जब स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने इस डीवाई बेथल एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर के जजमेंट का रेफरेंस दिया था। उन्होंने ये बोला था that people are not referring it to in their filing replies. Now here I want to take it that what is this judgment is all about. तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या सिंपल सी कहानी है साहब, मैंने माल खरीदा, मैंने सामने वाले से इनवॉइस लिया, माल लिया, उसको टैक्स दिया, मेरे बैंक अकाउंट से दिया। अब आप लाके मेरे को बाद में ये रोके मत कहो कि अब उसने आपको टैक्स जमा नहीं कराया इसलिए आप मेरे को आईटीसी नहीं दोगे। तो यार थोड़ी बहुत तो मतलब बात ये है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं भी इस देश का निवासी हूँ, मैं यहाँ पे टैक्स देने आया हूँ, मैंने पैसे भी दे दिए, बैंक अकाउंट में डाल दिए सामने वाले के, उससे इनवॉइस ले लिया, ई वे बिल मेरे पास है, तो भी पीछे वाला आदमी आपको नहीं मिल रहा, या मैंने उसको पैसे दे दिए उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी, या फिर उसने कोई पीछे से फर्जी आईटीसी लिया वो गायब है, मेरे पास सीधा क्यों आ जाते हो? तो हाईकोर्ट के आगे जाके ये बोला गया यार ये मजाक नहीं चलेगा। का एक बार ये डीवाई बेथल ने क्या कंक्लूजन किया, कंक्लूजन पर आपके पास है, उसको आप जजमेंट को कई बार आप अच्छे से पढ़िएगा। ये कहता है कि यार
ऑफिसर ने सीधा शो कॉज नोटिस टिकाया उस बिजनेसमैन को जो उनको मिल रहा था। उनकी जो पहले वाला बिजनेसमैन था जिसने उसको माल दिया था उसकी तो इनकी खोज खबर ही नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह पे गए तो ना वहां पे कोई आदमी मिला, खाली प्लॉट का रजिस्ट्रेशन था। तो उन्होंने कहा यार नहीं, अपन इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करो, पैसा तो कौन देगा, पैसा तो वो देगा जिसने पहले भी इसको पैसा दिया, तो उसको पकड़ते हैं। और उन्होंने कहा, यहाँ वो उसने हाईकोर्ट को अप्रोच किया, हाईकोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। अब पहले तुम करो उसकी इंक्वायरी कंप्लीट जिसने इसको माल दिया था, क्योंकि ये तो ये देखो ये क्या दिखा रहा है, इसने तो ये इनवॉइस दिया है, इसने बैंक में पेमेंट किया हुआ है, अब इसको अभी इसको परेशान मत करो। एक ही कंडीशन में तुम उसको परेशान कर सकते हो, तुमने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया पीछे वाले का और उसको पकड़ के तुम ले आए और उसने कहा कि नहीं साहब मैंने तो उसको कोई माल ही नहीं दिया, हम दोनों की मिली भगत है, वी हैव hand in glove in terms of committing crime. He has purchased goods from somewhere else, I have just passed on him the invoice. If that person says that and that is concluded by way of your investigation, then only go and disturb the good businessman. Don't disturb him prior to this. This was the high court view, and once the high court has given this view, I tell you, we need to rely very substantially on this and have to use it at all the forums where possibly we are dealing with those issues, जहां पे आपके एसएससी ने तो पेमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी उसको परेशान किया जा रहा है. So DY Bethel is a judgment which gives you a good ground on this. और आप भी अपने रिस्पेक्टिव कॉन्करेंट जुरिडिक्शंस के हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर स्टेक्स इतने इन्वॉल्व हो एंड द एसएससी इज हैप्पी टू गो एंड वन हेड ऑन फाइट विद द डिपार्टमेंट ऑन दिस. अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट अभी आया 2022 में आया, तो उससे पहले गुजरात हाई कोर्ट का था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फाइनली अपनी मोहर लगा दी कि यस जो गुजरात हाई कोर्ट ने बोला वो ठीक है. ये भी अपने आप में एक बड़ा क्लासिकल जजमेंट है और गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज पर टैक्स मांग सकती है. इसका एग्जाम्पल, अगर आपके क्लाइंट जो कि इंडिया के बाहर से माल मंगाते होंगे वो एक ट्रांजेक्शन करते होंगे जिसको CIF ट्रांजेक्शन बोला जाता है, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन. ये क्या होती है? ये होती है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे माल चाहिए, मैंने फॉरेन पार्टी को बोला माल दे दे, उसने कहा साहब मिल जाएगा, कहा 1,000 रुपये मैट्रिक टन और गाड़ी भाड़ा सारा मेरा, मतलब शिप का चार्जेस इंश्योरेंस फ्रेट सारा मेरा. मैंने कहा ठीक है, 1,000 रुपए की 1,000 पर केजी या पर मैट्रिक टन जो भी डील होनी थी वो फाइनली. अब होने क्या वाला है, शिपर को कौन हायर करने वाला है? शिपर को हायर करने वाला है जो मुझे माल भेजने वाला है. मेरा काम क्या है, जिस दिन उसका शिप पहुंच जाएगा मेरे पोर्ट पे, मैं बिल ऑफ एंट्री, मेरा CHA जाएगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और माल को छुड़ा के ले आएगा. अब मेरे को CHA को पेमेंट करना है, उस शिपर को पेमेंट किसको करना है? शिपर को पेमेंट करना है उस फॉरेन वाले. इनके क्या पेट में दर्द होता है, इनको चाहिए था टैक्स किसका? वो जो शिपर को जो कंसिडरेशन मिल रहा है बाय दी अथॉरिटी उसका इनको टैक्स चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो पोर्ट ऑफ कंजम्पशन है वो कौन है? वो इंडिया है. पोर्ट ऑफ कंजम्पशन इंडिया कैसे? क्योंकि इंडिया का बिजनेसमैन इस सर्विस को कंज्यूम करता है. अच्छा चलो साहब ठीक है. तो एक सवाल आता है साहब आप इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि शिपर को पैसे कितने दिए और जिससे मैंने माल खरीदा वो तो मुझे कभी बताएगा ही नहीं कि माल कितने का आया या उसने शिपर को कितने पैसे दिए, वरना तो मैं उसकी कॉस्टिंग निकाल लूंगा. उन्होंने कहा हम डीम्ड मानते हैं कि इस पे 10% जो है वो हम मान लेंगे कि आपकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, जो भी आपका कंसाइनमेंट वैल्यू और उस पर आप रिवर्स चार्ज में GST जमा कराओ बिकॉज यू हैव टेकन सर्विसेज फ्रॉम शिपर. अरे मैंने कहा ली सर्विसेज भाई, सर्विसेज तो उसने ली. नहीं 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 नहीं, आपने वो गुड्स खरीदा, उस गुड्स में इनबिल्ट होकर आ रही है सर्विसेज. अरे हमने कहा भाई रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन देखो, वहां लिख रखा है द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन. नहीं नहीं नहीं, वो देखो 2-3 सेक्शंस को मिला के पढ़ेंगे. सो एनी पर्सन कैन बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. चलो ये इनका मानना था, ये आर्ग्यूमेंट्स थे. इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो बड़ा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट हुआ फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो ये था, मैंने माल खरीदा, जब मैं माल इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाता हूं तो मुझे एक टैक्स और देना पड़ता है जिसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. उस कस्टम ड्यूटी के संग एक और टैक्स लगता है जिसका नाम IGST है. ये कौन सा IGST है? ये है IGST ऑन गुड्स. चलो ठीक है सर. अब हम जरा उसका वैल्यूएशन मैकेनिज्म देखें. उसका वैल्यूएशन मैकेनिज्म ये कहता है कि आपको FOB प्लस ट्रांजिट प्लस शिपमेंट वैल्यू जो होती है, जो शिपर के चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड करके वो जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर आप देंगे. मतलब समझ में नहीं आया. इसका मतलब ये है कि 1,000 का माल अगर मैंने खरीदा, 1,000 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने माल खरीदा, उसके अंदर
जब मैं कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट वाला आईजीएसटी दूंगा तो उसके अंदर वो जो शिपर चार्जेस है वो इंक्लूड होने चाहिए, वो तो वैसे भी इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो सीआईएफ टर्म्स है। जब आप मेरा बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट करोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी वो प्राइसेस इंक्लूडेड है, वो चार्जेस इंक्लूडेड है, क्योंकि सामने वाला तो मेरी कॉस्ट का पार्ट बना के ही मुझसे चार्ज करेगा ना। तो हम कोर्ट के आगे गए, हमने समझाया कि साहब देखो, सीआईएफ ट्रांजेक्शन में हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उसपे तो ऑलरेडी हमने टैक्स आईजीएसटी दे दिया, क्योंकि वो गुड्स की वैल्यू का पार्ट हो गया। वो अभी नया मैकेनिज्म क्या निकाल रहे हो कि उसकी 10% वैल्यू पे आप मुझे एडिशनली आईजीएसटी कंसिडरिंग कि मैंने एक सर्विसेज कंज्यूम करी है वो जमा कराने का कहते हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं यार, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कहा साहब, दिस इज अ ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट क्या है कि साहब मैंने माल खरीदा, मेरा डोमिनेंट नेचर माल खरीदने का था, उसके वैल्यूएशन में आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी सर्विसेज। तो ये जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन बन गया सप्लाई ऑफ गुड्स, ये कोई सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए अगर आप, क्योंकि ये कस्टम वैल्यूएशन रूल में आईजीएसटी में लिखा हुआ है कि जो टैक्स लगेगा उसके अंदर ये वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी और वहां पे आपने टैक्स दे दिया है, तो फिर दोबारा जब आप हमसे सर्विसेज पर टैक्स मांगने आ रहे हो तो दिस इज incorrect. This is beyond the provision of Section 8 of Composite Supply, and accordingly, this need to be quashed out. And this is what has been done by Supreme Court in Mohit Mindal's Supreme Court judgment. Taking you further, ये वीकेसी वाला बाद में लेता हूँ, एक जजमेंट को ले लेना है। चलो ये वाला पहले ले लेता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। इफ समवन वांटेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, ये क्या है? इस जजमेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकली साउंड इशू डील हुआ, और ये कई जगह काम भी आ सकता है आप लोगों को। इशू कुछ इस तरीके से था कि एक टोरेंट पावर करके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसने क्या किया, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन होता है उसके मीटर चार्जेस लिए असेसी से, तो जिसको भी वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, कि कहा भाई इलेक्ट्रिसिटी तो हम आपको देंगे लेकिन अभी हम आपके इंस्टॉलेशन करने आए ना, तो आप हमको मीटर चार्जेस दे दो। कितने भाई? 10,000 रुपए। अच्छा, दूसरा उन्होंने बोला कि देखो साहब क्या है, आपके यहाँ पे आसपास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमको वो दूर से लंबी सर्विस लाइन ला के आपके यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा, तो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते दो। वो कितने साहब? वो 5 लाख रुपए। मैंने कहा ये भी पकड़, ताकि हमारे यहाँ बिजली तो आए, और फिर हर महीने हम आपको बिजली का बिल देंगे। तो डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और बोला कि भाई ये जितने भी चार्जेस आप लेते हो अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, लाइन एक्सटेंशन चार्जेस, कनेक्शन चार्जेस, इन सब के ऊपर आप जीएसटी जमा करो। मतलब इनका ये कहना था कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट, इलेक्ट्रिसिटी एज अ गुड इज एग्जेम्प्ट, बट ये जो एंसिलरी एक्टिविटीज है वो कहीं एग्जेम्प्ट नहीं। अच्छा, इनसे कोई पूछे भाई मीटर क्यों लगवाऊंगा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा स्टेटस सिंबल है बाहर मीटर लगा हुआ मेरे घर की, मीटर में इसलिए लगाऊंगा बिकॉज आई नीड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए लगाऊंगा। मत लगाओ मीटर, आप तो कोई और तरीका निकाल लो, मेरे यहाँ तो बिजली दे दो, मेरे को तो वो चाहिए। सो द पॉइंट केम, द सेम थिंग रेड बाय द हाई कोर्ट इन मोर टेक्निकल टर्म, वेयर दे रेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ टर्म कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। दे सेड दैट सी अंडरस्टैंड इट, और उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि सी व्हाट इज द डोमिनेंट नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज बेसिकली टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, now in process of that there are certain charges is required to start those services. So the point is whether that services which is required to be taken to start those services can be bifurcated. The answer came to no, this need to be continued in the same way. The main services has to be seen and its taxation should go with the main service, and accordingly a circular was quashed where they say that of those ancillary charges the GST can be collected. यही सेम लिटिगेशन हमने, मतलब ये जितने भी मैंने आपको लिटिगेशन बताए, चाहे गुजरात में हुए चाहे किसी और हाईकोर्ट में, ये सारे के सारे राजस्थान हाईकोर्ट में हम लोग भी कर रहे हैं, एंड नॉट इवन राजस्थान, वेयर ऑल वी हैव आवर ऑफिसेज इन दिल्ली, इन गुजरात, देयर आल्सो वी आर लिटिगेटिंग द सिमिलर मैटर्स एट द रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट्स। एंड आई टेल यू, इस वाले जजमेंट में यहाँ पे भी लिटिगेट किया। नाउ द आई जस्ट केम टू नो यस्टरडे दैट एन एसएलपी हैज बीन फाइल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द डिपार्टमेंट चैलेंजिंग दैट जजमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, समझेंगे, इशू तो वहीं जाके सेटल्ड होगा, क्योंकि ये वाइड रेमिफिकेशन वाला जजमेंट है। लेकिन मैं व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस जजमेंट,
This is around 70 pages judgment, but give you a classical example of understanding what is the concept of composite supply. So if a person of academic interest want to understand what is composite supply, please refer to this judgment. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है. हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया जहाँ पे उसके पास एग्जामिनेशन करने के लिए ये था कि हाई कोर्ट ने क्या किया, एक रिसीवर अपॉइंट किया. सॉरी, हाई कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया. और रिसीवर क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि कई बार होता है कि कोर्ट को एक मीडिएटर अपॉइंट करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर. इसका काम ये था कि भाई तुम ये चेक रखोगे कि ये किराया सामने वाले को जा रहा है कि नहीं जा रहा. उसके लिए जो किराया दे रहा है उसको 4,4500 रुपए पर मंथ के हिसाब से इस मीडिएटर को एक सैलरी देनी पड़ेगी. ठीक है. सवाल ये आया कि ये जो मीडिएटर को 45,000 मिल रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, वेदर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज अंडर जीएसटी. यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ is neither supply nor supply of goods or services as per schedule 3rd. तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट रिसीवर है, he is also an extended arm, क्योंकि कोर्ट तो है नहीं वो रिसीवर, लेकिन उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है that is an extended arm of the court services. Therefore the services of court receiver are to be considered as services provided by any court, and according the fees charged or paid to the court receiver are not liable to GST. Now this point has come up as a very beautiful manner by way of this judgment, because this has effectively led to the conclusion that you need to see whether the ancillary activity is something which is part and parcel of the main activity, or it is a separately identifiable activity. So this was concluded as if that this is a part and parcel of the main activity, and accordingly there would not be any taxability on this transaction. ये भी बहुत ही classical judgment if you want to understand that what can be the scope and extent of a particular entry which is given in the exemption notification. रिपोर्ट कार्ड में 4 तो अच्छी चीजें बताई, एक ये है वीकेसी फुटस्टेप. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जजमेंट मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ रिलीफ गिवन टू द असेसी. क्योंकि देखिए कई बार जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक लॉ पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपको कई बार ये भी देखना पड़ता है कि ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा एब्सर्ड तो नहीं हो रहा. आप कई बार बहुत चीजें अगर लिटरली पढ़ देते हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे आई गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू द एन वेंकटरमन साहब. ही वाज द एएसजी हु वाज आर्ग्यूड इन दिस मैटर, fabulously argued, and he made the court to understand that please go on the literal interpretation, don't do be a creators of the law, or don't try to give a benefit which is never provided under the law. Even though there was very good points to say that the benefit was extendable to the assessee, but he made out read to the court, and now it is law of the land that a benefit which conceptually should be given is not available under the law. वो है क्या? वो ये है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है. जूता ऑनलाइन जब बिकता था या रेडीमेड गारमेंट जब ऑनलाइन बिकता है तो क्या होता है, उसकी कॉस्टिंग होती है 200 रुपए और वो बिकता है 600 रुपए का. वो जो 400 रुपए उसमें से 150 रुपए जो होते हैं वो ऑनलाइन चार्जेस होते हैं. फ्लिपकार्ट का कमीशन होता है, अमेजोन का कमीशन होता है, उनके लिस्टिंग चार्जेस होते हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस खर्चा होता है. तो वो ऑनलाइन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अब आप वी ऑल अंडरस्टैंड देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार मार्केट. वी ऑल हैव ऑनलाइन मार्केट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस. ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सर्विसेज का मेजर कंजम्पशन होता है. जैसे आइटम की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि होता यह है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 600 रुपए का जूता बिकता है, उसमें 200 रुपए जूते की परचेज प्राइस है. 600 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा से 5% लग रहा है, क्योंकि 1000 से कम वाला जूता था. अभी तो रेट्स काफी इन्होंने रेशनलाइज किए हैं. 600 पे 5% अगर टैक्स बनता है तो एक्स अमाउंट बनता है, 200 पे 5% बनता है तो एक्स अमाउंट बनता है. अब बात ये आती है कि अगर 200 रुपए की सर्विसेज और ले ली जिसपे 18% टैक्स हुआ, तो 36 प्लस 10 40 हो गया, और जबकि 600 रुपए 5% निकालूंगा तो 30 होगा. 16 रुपए का आईटीसी एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा. नाउ द प्रॉब्लम कम्स अप कि ये जो आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ ये तो जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट के टोटली अगेंस्ट है. क्यों भाई? जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट करता है कैस्केडिंग नहीं होनी चाहिए. मैंने पीछे से जो टैक्सेस दिए, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कंज्यूमर के ऊपर लोड करने हैं. अगर मैंने वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिए तो उस पर दोबारा टैक्स लग जाएगा. कायदा ये होना चाहिए कि भैया वो टैक्सेस जो मैंने पीछे दिए वो साइड पे रखो,
कॉस्ट पे टैक्स लगाओ, आगे वाले से जो टैक्स वसूलो इस टैक्स को सेट ऑफ करो, बात खत्म करो, ताकि चीजों की वैल्यू कम हो। ये तो है सिंपल कंसेप्ट। उसी कंसेप्ट को आर्ग्यू करते हुए ये बात आई कि अगर कोई भी ट्रेडर के पास आईटीसी इसलिए एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि उसने इनपुट सर्विसेज कंज्यूम करी है और उसके आउटपुट की जो रेट है वो कम है और इनपुट की रेट है, इसकी जो डिफरेंस है, मतलब क्योंकि टैक्स रेट कम होने पे नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको इन सर्विसेज पे लगे हुए टैक्सेस का रिफंड मिल जाना चाहिए। वीकेसी फुटवेयर डिसाइडेड नो। Under section 54(3) read with clause proviso 2, this is restricted, and rule 89(5), which is part of the books of the law, is a correct judgment, is a proper judgment, is a proper rule. Assessee argued, or assessee argued kya? VKC footstep, Gujarat High Court was in favor. Madras High Court, in case of TVL, Translistro, Afcons joint ventures and others versus Union of India, was against. So there were two contradictory views. One is of High Court of Madras and one was a High Court of Gujarat. Gujarat was in favor of SSC, Madras was in against of SSC. Bunch of this petition reaches to Supreme Court, and the Supreme Court decides in favor, uphold the judgment of Madras High Court and said that कि भाई लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं है तो हम आपको रिफंड अलाउ नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्सन का एक्यूमुलेशन हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, सॉरी, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिफंड ऑफ द सेम। गरीब मार है, बिजनेसमैन है, आप उसका जो आईटीसी इकट्ठा होता है उसको वापस दोगे तो उससे क्या करेगा? अगर आप मगर अगर आप इस कंसेप्ट को समझे तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ज्वेलर्स के केस में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया, वो रेडीमेड गारमेंट्स वालों के भी केस में ऑब्जर्व किया, उन सब के केस में जो ऑनलाइन डीलिंग करते हैं, बहुत सिंपली ये निकल के आया कि उनकी बैलेंस शीट अगर अपन जाके देखें तो एक तरफ असेट दिखेगी, क्या असेट दिखेगी? आईटीसी। पहले दिखेगा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एक असेट में दिखेगा जो है आईटीसी। वो आईटीसी किसके पास रखा है? मेरे पास रखा है, वो तो एक्यूमुलेट होता रहेगा, उससे हो रही है गवर्नमेंट की फंडिंग। प्रॉफिट बिजनेसमैन मैं हूँ, पैसा मैं कमा रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे हो रहा है और वो पैसा कहाँ रखा हुआ है? सरकार के पास। गलत है, यू कांट डू दिस। उस बिजनेसमैन ने पूरे साल भर मेहनत करके अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया, उस रिपोर्ट कार्ड में प्रॉफिट दिखा और उसका पैसा आप उसको दे नहीं रहे, अपने पास रख रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में। ये this is something which I always say that the government need to understand it as a concept and find out, are they going or they arguing something, or they, if it is not provided under the law, kindly provide it, ताकि क्या हो सके, वो रिलीफ मिल सके, जिससे फाइनली बिजनेसमैन या फिर जो कंसेप्ट है टैक्सेशन का उसको इम्प्लीमेंट हो पाए। इन्होंने इसका दूसरा तरीका निकाल दिया, उन्होंने कहा हम तो क्या करेंगे, हम टैक्स रेट आउटपुट की बढ़ा देते हैं, रेशनलाइजेशन ही खत्म करो, ऐसा बढ़ा दो कि काम ही हो जाए। अरे भाई तुमने पहले रेट क्यों कम करी थी? क्योंकि जूता और कपड़ा एसेंशियल सेक्टर होता है, उनको सस्ते रखना पड़ता है। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं हम उनकी रेट बढ़ा देंगे, तो फिर देखो, फिर ये तो क्या है, दो अलग अलग बातें हैं जिनका कहाँ जाके समागम होगा वो तो पता नहीं, बट दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। जीएसटी काउंसिल ने यही किया नेक्स्ट मीटिंग में, एक के ऊपर एजिटेशन हुआ तो एक को रोल बैक करना हुआ, बिजनेस मैंने का पड़ा होगा तो पड़ा रहेगा, आईटीसी देख लूंगा मेरे को क्या करना है, and which effectively leads to other problems. So with this, I'm back to the organizers. It's 5:53. I have still 7 minutes where I can take up certain queries or discussion points if you are welcoming those. Else, I would be thankful to the participants also to patiently listening me, and the organizations and moderators who have invited me for this program. Thank you so much. With this, over to you. Thank you, sir. Thank you so much. If anyone have a query, please raise your hand. Welcome, Atul sir. शंकर जी किसी के आए कि क्वेरी कुछ? तो सर कोई क्वेरी है नहीं, बस सब पीपीटी शेयर के लिए कह रहे हैं बस। ओके
Now, I would like to request CA Lokesh sir to give vote of thanks. राहुल जी ने पीपीटी शेयर कर दी है। किसी मेंबर को अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई उसको नहीं कर पा रहा है डाउनलोड, तो आप CIRC@ICI.in पर रिक्वेस्ट डाल दें, हम आपकी मेल आईडी पर उसे शेयर कर देंगे। हाँ संकेत जी। Sir, please give vote of thanks. थैंक यू संकेत जी। मैं आज के हमारे स्पीकर एडवोकेट CA राहुल लखवानी जी, राजस्थान के लिए वैसे अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और जो आज का सेशन लिया, जो जीएसटी के अंदर जो हमने 7 दिन का जो पूरा एक सीरीज चलाई थी जीएसटी का पाठशाला, उसका लास्ट डे था। तो पूरी जो जीएसटी की पाठशाला है वो बहुत अच्छी तरह से रही। और जो आज सर ने जो जुडिशियल जर्नी के बारे में बताया, क्या क्या ट्रांजेक्शन हम करते हैं, गलत कर देते हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी सर ने एक्सप्लेन की। मैं सर का थैंक यू करता हूँ। साथ में उन सभी मेंबर्स का भी थैंक यू करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू संकित जी फॉर मॉडरेशन। Thank you, sir. Thank you. Thank you. इसके बाद आज हमारा एक सेशन और है जो अपॉर्चुनिटी इन MSME है, जो हमारे साथ हमारे पास्ट रीजनल काउंसिल मेंबर, पास्ट वाइस चेयरमैन ऑफ CIRC CA अतुल अग्रवाल जी साथ में है, जो हमारे आज के स्पीकर भी है। मैं उनका वेलकम करता हूं। Thank you, Lokesh ji. So, should I start or? सर जस्ट मैं एक बार उनसे बात करता हूँ। चेयरमैन साहब अगर आ रहे हैं तो 1 मिनट लूंगा मैं आपका केवल। चेयरमैन साहब सर मीटिंग में चल रही है बात। ओके बुला लें क्या सर? हाँ सर, अगर वेलकम स्पीच दे दें बहुत अच्छा है। एक मिनट सर, इधर ही बुला लें। यस सर। हेलो जी सर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूं दोबारा, एक बार इनका खत्म हो जाए। चेयरमैन साहब आ गए सर। हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। मैं आई रिक्वेस्ट टू our respected CIRC chairman C. Atul Mehrotra ji for welcome speech on the International MSME Day. Over to you, sir. Thank you, Lokesh ji, the dedicated secretary of Central India Regional Council, my friend Atul Agrawal ji, and today's speaker on the MSME International Day, my seniors, friends, boys and girls. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को इंटरनेशनल MSME डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात ये ज़रूर है कि जो हमारे देश में ये दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी ICI भी कर रही है, तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े और इसमें एक अपनी नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी प्लस एक नए सेगमेंट को आगे बढ़ाने में जो हमारा सहयोग है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंसल्टेंट, उस पर थोड़ा सा फोकस करें और उनकी भी मदद करें। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, तो उसमें जब MSME सेक्टर आगे बढ़ेगा हमारे प्रोफेशनल मेंबर्स के सपोर्ट से, तो ये बात बिल्कुल तय है कि उनके साथ साथ हम लोगों को एक ये फील भी आएगा एक प्रोफेशनल सर्विसेज के अलावा कि हमने देश की इकोनॉमी में, जैसा कि हम लोग जाने जाते हैं, वी आर पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इस MSME सेक्टर के को सपोर्ट करने में हमारे मेंबर्स का जो सहयोग होगा या हो रहा है, जो पास्ट में भी हुआ है, उसको देखते हुए हम जरूर इसको एक बेहतर और ऊंचाइयों पर इस सेक्टर को ले जाने में हमारे साथियों की मदद से हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। अतुल अग्रवाल जी हमारे जो आज के इस
प्रोग्राम के इस पीसीएम के स्पीकर हैं वो हमारे नोएडा से हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल था उनका आज। कुछ फिजिकल प्रोग्राम भी थे उनके एमएसएमई से संबंधित, लेकिन उन्होंने हम लोगों की बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक आग्रह स्वीकार कर लिया, and anyhow he managed to spare some time for our members of the Central India Regional Council. So thank you Atul bhai for your valuable time and the consideration towards our CIRC, and our team is there. We have already launched a MSME help desk at CIRC level, and there is a professional team who is behind us, and our members are requested, whenever you have any queries regarding MSME, then we have a panel as well. In addition to our that professional alliance or agreement with the professional person, you are requested to kindly, there is a separate email ID for that. आपकी जो क्वेरीज हमारे पास आएंगी, हम अपने उस एक्सपर्ट पैनल प्लस वो जो आउटसोर्सिंग किया है हम लोगों ने, उनसे आपकी क्वेरीज का जवाब लेके और हम आप तक वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे सीआईआरसी की टीम ने ली है। और ये एक अच्छी पहल है और पूरी सीआईआरसी की टीम का सहयोग है। अतुल भाई का भी उसमें बहुत बहुत सहयोग है, क्योंकि ये इनिशिएशन हमारे अतुल जी का और हमारे जो हमारे अभी इससे पहले 21-22 में जो चेयरमैन थे नीलेश गुप्ता जी फ्रॉम इंदौर, उनका एक ड्रीम था, उनकी एक पहल थी और दोनों लोगों ने मिलकर हम सब लोगों ने इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करी है और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी एंड द टीम एंड अतुल भाई। ओवर टू लोकेश भाई। Thank you, sir, for your words of wisdom. Now I hand over the session to our respected speaker, C. Atul Agarwal ji. Thank you, Lokesh bhai, for inviting me, respected chairman, Shri Atul Malhotra ji, secretary, Shri Lokesh Maheshwari ji, and the attendees who are present here in the today's session. First of all, I would like to congratulate you for this International MSME Day. And friends, as you all know, on 27th of June every year now we are celebrating MSME Day. Let us understand what exactly the purpose of purpose of the government is for celebrating this MSME Day. So if we summarize it as per the policy of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the idea is how can we enhance the competitiveness in MSMEs. And before starting my PowerPoint presentation, especially on the MSMEs, I would like to give few outlines. What exactly, how many MSMEs are there, how many MSMEs are registered, and how these MSMEs are working in our country. So as you all know, MSME is highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy. We talk about it is the second largest employment generator after agriculture. So as we all know, agriculture is the main core activity of our country, and after agriculture, MSME is the another sector. So that's what it is called as the second largest employment generator after agriculture by engaging more than 12 crore persons. So believe me, in MSMEs in our country, more than 12 crore employees are working. There are more than 63 million MSMEs. And out of 63 million MSMEs, 11.36 million MSMEs are registered, meaning thereby rest of the MSMEs are still not registered. और अगर हम इस फिगर को कंपेयर करें तो टोटल नंबर ऑफ MSMEs में से मुश्किल से 20% MSMEs रजिस्टर्ड हैं और 80% MSMEs अनरजिस्टर्ड हैं. So यहाँ पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रोल आता है कि whosoever is our client is, we should motivate that particular client that we should also get registered under MSME. और आपको एक बात बता दूं कि इसमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी MSME में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी इसमें MSME में रजिस्टर्ड हो सकता है, ट्रेडर भी आपका MSME में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है. सो इफ वी टेक एन इनिशिएटिव एंड इफ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट का मेरा मॉडल क्या है और वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है, MSME के बेनिफिट्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, then we should motivate our each of our client that they should get registered under MSME. एक इशू आता है MSME रजिस्ट्रेशन में कि एक कहीं ना कहीं एक माइंड में ये है कि भाई MSME रजिस्ट्रेशन के लिए हमको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. तो वो भी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि इवन इफ यू हैव ए पैन नंबर, यस पैन नंबर इज मैंडेटरी,
So if you have a PAN number, then also you can go and get registered under MSME. आपका उसमें एक undertaking देना होगा that my turnover is below 20 lakh rupees or below 40 lakh rupees, and therefore I am not eligible for registration under GST, and after that you may get your Udyam registration. That is called Udyam registration. Now, if we talk about the total GDP, MSME has a share of 29% in GDP. And to make India 5 trillion economy, MSME share should be more than 50%. So अभी आप समझें कि अभी हम सिर्फ GDP में 29% contribute कर रहे हैं, MSME सिर्फ 29% contribute कर रही हैं. And if we really wanted to touch the economy, Indian economy to 5 trillion, then the share of MSME should be more than 50%. MSME sector contributes highly to Indian exports. In 2017-18, अगर हम बात करें तो revenue generated through export was more than 34%. Means the total revenue जो हमारा export से generate हुआ, उसमें 34% revenue was generated from MSMEs, and that figure is relatively old. That is for 2017-18. And India's MSME sector has the potential to create up to 1 crore new jobs in next 4-5 years. And it is a truth. Like we are talking about unemployment, we are talking about job opportunities nahi hai, but if we focus upon the MSME units, and if we focus upon if we guide our clients like what all benefits they are going to get once they get registered under MSME, then I'm sure that employment generation will be there, and we would be able to generate at least we would be able to generate around 1 crore employment over a period of next 4-5 years. Friends, if you talk about the registration, how many units were registered? So if we talk about in September 2000, during the period of September 2015 to 2019, there were 76 lakhs MSME units which were registered on Udyam registration portal, and the sector is key in realizing the inclusive growth agenda of India, as 1/5 of MSMEs are residing in rural areas. That is again a very interesting figure, because if we talk about the industrialization is normally in urban areas, but if we talk about the MSME units, then 20% of the MSME units are in rural areas. Similarly, if we talk about, if we read the annual report of Ministry of MSME, we will come to know that this sector is contributing around 3.6 crore jobs in the manufacturing sector, and which is almost 70% of the total job which have been created over a period of time. Aggregate MSME lending has expanded rapidly over the last 5 years, and I'm sure you all must be aware about during the course of pandemic, lots of other benefits and reliefs were given. And these benefits and reliefs were mainly to the MSME industries. Either you talk about GECL 1, GECL 2, GECL 2.1. All these schemes were announced by Reserve Bank of India to promote the MSMEs and to hold the hands of the MSMEs during the course of pandemic. Total balance outstanding has increased from 10.4 lakh crores in December, which was there in December 2013, to INR 25.3 lakh crores in December 2018 at a CAGR of 19.3%. These are few data which I would like to share before starting the presentation, especially on what all opportunities are there, because again, if we talk about the opportunities, so there are different parameters. First, what all opportunities are available under the central government schemes, and what all opportunities are available under the states. So every state is having different policy, but there are certain uniform policies which are available from the central government. I'm sure you must have gone through with the US Sinha report, where this report was talking about the major challenges faced by this sector. First, policy and institutional interventions. So need to form targeted policies. As of now, if we talk about in the area of infrastructure development, in the area of formalization, in the area of technology adoption, there was a requirement of targeted policies. And if these targeted policies should respond to demands of the market, means it should be from time to time, if required, the amendment is also required, and these policies should be framed as per the
demand in the market. Then if we talk about the growth, then definitely we need to felicitate, we need to nurture and support innovative business ideas. And that is the reason, I'm sure you must be aware, lots of startups are coming up, and the idea is where we can use the innovative business ideas in the trade and businesses and shape them into enterprises. And MSME ecosystem is not evolving due to limited number of entrepreneur development and incubation centers and entrepreneurial ethos. I'm sure आप सबके पास इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एक मेल बड़ा रेगुलरली लास्ट ईयर भी आया था और अभी भी आ रहा है कि if any of you is willing to go for a incubation center, the purpose of incubation center is where you need not to have your own setup. You may ask from the institute. They would be giving you a small place where you can go and start implementing your ideas, what exactly your ideas are coming up. So these kind of incubation centers, they were required to be started, and central government has taken so many initiatives to start the incubation centers. At the same time, Institute of Chartered Accountants of India has also started these incubation centers. Reach of various schemes and credit support is constrained due to lack of formalization and low level of registration of MSMEs in Udyog Aadhar memorandum. As I mentioned in the initial remark that only 20% MSMEs are registered and the rest of the MSMEs are not registered. So if we talk about the policies, now government has come up with the policies. If you are a small businessman, then even if you are not registered, then also you may get certain benefits. But the important is if you are a registered MSME, then your benefits are substantially more than the benefits which are going to be given to unregistered MSMEs. And then promoting formalization and digitization among MSMEs and encouraging them to register with is a challenge. Friends, if we talk about the purpose again for this report, the purpose of this report was how can you felicitate capacity building, especially in MSMEs, where the companies can start and have can avail the benefits which are available from the government of India. And again, the idea was there must be a technological intervention for improving underwriting standards and delivery and enabling market linkage and tie-ups with the public procurement platforms. So now this was the overview as far as the MSME market is concerned. And now I would like to share the PPT where we will understand what all policies are available from the central government. So here, friends, we would be discussing about the schemes which are available from the central government, because if we talk about in Central India region, we have 7 states. So in each state, there are different policies. Now we are sitting in UP. If we talk about in UP, then in UP, there is one policy which is called UP Electronic Policy 2017, which was amended in 2020. We have a policy where we are talking about food processing unit. We have a policy where we are talking about the oil manufacturing units. So there are different schemes, different policies. Even if we talk about UP, then again, UP government has created lots of clusters. Like there is one cluster which is in Banaras, especially we talk about this Badoi. Badoi is a place where lots of carpets are being manufactured. If we talk about Mathura, Mathura again is being developed as a cluster for this what we call poshak. Especially this for जो आपका भगवान की पोशाक बनती हैं, तो मथुरा is being developed as a cluster for poshak. So like that, in every state we have different policies. If we talk about Uttarakhand, in Uttarakhand we have a different policy. Especially they are talking about the energy development, and in energy development, if we talk about, then they are more and more focusing upon how this apart from this hydro energy, how this energy can be created through wind. Because there are certain areas where there is a wind speed, good wind speed, and where that energy can be created. So in different states, different schemes are there. Here today, as the time is only for 1 hour, so we are going to discuss about what all government schemes are available, central government schemes are available. So if the idea is the central government has come up with different schemes. First scheme was
Prime Minister's Employment Generation Program. We will discuss these programs in length subsequently. Let me go through with the programs first. Second is credit guarantee schemes for micro and small enterprises. As you all know, CGT-MSE, where normally the banks are not allowing the credit facilities to the needy borrowers. And earlier the ceiling of the amount was around 1 crore. Now subsequently it was increased to 2 crore, and now in few banks it is up to 5 crore. So if you go and approach any particular bank for your client that you need a fund under CGT-MSE, where there is no collateral is required, yes, your client can get the credit guarantee, but again, your client can get the credit facility against the insurance, credit guarantee insurance, and that for that you have to pay a fee for credit guarantee insurance, which is equivalent to 1.5%. The next is a scheme for fund for regeneration of traditional industries, which is known as Spurti. Next is second loan for upgradation of existing PME, GPA or Mudra units. There are again, if we talk about upgradation, then if there is any technology upgradation also, then also you get the benefit, you get the loan under this particular scheme. Then micro and small enterprises cluster development, as I already mentioned, like if we talk about UP, then a particular city is being like Agra is being developed as a cluster for shoe manufacturing. Banaras is being developed as a cluster for carpet manufacturing. Mathura is being developed as a cluster for poshak manufacturing, like that. And then entrepreneurship skill development program, where they are motivating the industries, where the people can send their employees for training purposes, not only in India, outside India also. And the cost of that particular training programs is being borne by the central government, where you can claim, yes, there is a system of reimbursement. Initially, you have to depute someone, you have to produce the documents, and then after that, you can claim for the reimbursement from Ministry of MSME. Then assistance to training institutions. Government has started certain clusters, and they have started, there are certain tool rooms, there are certain training rooms where you can send your employees, where you can get the world-class technology, world-class training, not only in terms of the manufacturing, but also in terms of what all other facilities are available. Then procurement and marketing support scheme. JAM is one of the example. Government has created a JAM portal, and now if we talk about most of the government organizations, there is a precondition that if you are registered on JAM, then only your product shall be purchased by the government department. So that is also a part and parcel of this MSME schemes which have been started by the central government. Then National SC/ST Hub Scheme, that is specifically for the entrepreneurs who are from this SC/ST category. Then Koir Vikas Yojana, that is specifically for Jute Udyog, and especially if we talk about जो हमारे mattresses वगैरह होते हैं, which is that is Koir Vikas Yojana, which is an umbrella scheme, and that is for skill upgradation, and Mahila Koir Yojana. Basically, they wanted to promote women entrepreneurs in the small villages, and where they can upgrade themselves in terms of the technology, and then they would be supporting this industry for getting the better quality of coir. Then international cooperation scheme, that is here the government is motivating the entrepreneurs to depute their team for training outside India in the different countries, depending upon the nature of the project. Like if we talk about the electronic goods, if you wanted to train your technical team, then you can depute your technical team depending upon the country where your product is being manufactured mainly, and then whatever the cost will come, again you can ask for the reimbursement of that particular cost from the Ministry of MSME. A scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. That is again, if we talk about startups, are one of the part of that scheme. So if you are starting the startup, you will be covered under this scheme, and you will be getting the benefits from the central government under this scheme. Friends, apart from the industry, I'm sure you must be aware about lots of cottage industries, and Khadi Gram Udyog industries are also being promoted by this central government. And for that, they have come up with a scheme, Khadi Gram Udyog Vikas Yojana umbrella scheme. And that scheme has been divided into two parts. One is Khadi Vikas Yojana, where they are
willing to they are willing to provide modified market development assistance, interest subsidy eligible certification, workshare schemes for khadi artisans. So जितना भी आपने देखा होगा खादी के ग्रामोद्योग अलग अलग सिटीज में आपका खादी विलेज या खादी ग्रामोद्योग की शॉप्स हैं, वहां पर आपको खादी से रिलेटेड बहुत सारे आपके वुलन कपड़े भी मिलते हैं, आपका और भी बहुत सारे आइटम्स हैं विच इंक्लूड्स हनी, विच इंक्लूड्स soap, which includes so many small items. So government is promoting, and these kind of udyogs, khadi gram udyogs, are being established in the rural areas where the employment is being given to the villagers, nearby villagers, and the things are being produced. And these udyogs are getting subsidy on interest also. They are getting the credit. They are also getting the credit facility from the banks under khadi under KVIC, that is called KVIC scheme, and then they are getting the loan at a substantial rate of interest, is concessional rate of interest, and at times if required government is giving certain areas also where these people can start their production. Another is Gramodyog Vikas Yojana, that is specifically for beekeeping, especially which is being used for honey production of honey, then pottery activities, and then agarbatti making projects, because that is something, the projects which are handmade projects, and if we work with these projects, then definitely जितना भी आप देखेंगे खादी ग्रामोद्योग की शॉप्स पर जब जाते हैं तो अगरबत्ती एक आपका है कि जो ब्रांडेड अगरबत्ती है, ब्रांडेड आपकी धूपबत्ती आ रही है, वो सारी मशीन मैन्युफैक्चर्ड है. बट इफ यू टॉक अबाउट द अगरबत्ती मैन्युफैक्चर्ड under Gramodyog Vikas Yojana, these are being manufactured, handmade agarbattis are there, and I'm sure you will be getting the benefit out of it. As I mentioned earlier, also tool room and technical institutions, a component of infrastructure development and capacity building scheme. Then there is another scheme called Self-Reliant India, where again they are going to give you the funds, credit facilities. Then credit guarantee scheme for subordinate debt for stressed MSMEs. बहुत सारी MSMEs है who might have faced the challenges. Account might have got converted into an NPA. Then again, there is a scheme where you can get the, let's say if you have invested 200 crore rupees, which includes your unsecured loan component, which includes your share capital also, then you are eligible for getting the additional facility under this scheme to the extent of 15% or 75 lakhs, whichever is lower. So if your total investment is for 2 crore rupees, then you are eligible for 45 lakh rupees, 30 lakh rupees. So that would be an additional facility to take out your unit, or you can say to upgrade your unit from stressed unit to the standard unit. So that facility is also available, and that is called credit guarantee scheme for subordinate debts. And then another scheme is MSME champion scheme, where you get the substantial certification, you get the competitive loan, you get the innovative incubation, IPR, design and digital MSME, and you get the another benefit is digital MSME. And friends, for that, if you go at the portal, which is called Champion Portal at Udyam site, UAM site, then there is a separate portal called Champion Portal, and then you can get these kind of certifications and the benefits from the scheme. Now, let's understand what exactly the Prime Minister Employment Generation Program is. Again, the objective is to provide the financial assistance to set up self-employment ventures and generate employment in rural and urban areas. So it's like if government is giving you a facility after completion of your education, you would be able to approach Ministry of MSME that you would like to start your own setup. You have to give them an idea, and then you have to tell them that how many employees you are going to hire. So there is a win-win situation. You have your own setup, and then you are employing the people also. So that's what the idea, the objective of the government is, to provide the financial assistance to have your own setup where you can generate the employment opportunities for rural and unemployed youth, as well as prospective traditional artists and halt occupational migrations. Basically,
आइडिया इज कि जो आपका एरिया है, लोकल एरिया में लेट्स से you are going to set up a unit in Kanpur, then or maybe any place near Kanpur, let's say Unnao, then you would be able to employ the unemployed people who are around your area. So that was the objective. And what all benefits are there? These kind of projects are being financed by banks under the subsidy program for setting up of new micro enterprise in non-farming sector, means should not be in the agriculture sector. And you have a subsidy also, margin money subsidy on the bank loan that ranges from 15% to 35%, maximum up to 50 lakhs in case of a manufacturing sector, and maximum up to 20 lakhs in case of a service sector. And other information, what other informations are there? A scheme is applicable for an individual above 18 years of age. The own contribution in this case shall be in case of manufacturing unit, if it is a general category, then should be minimum 10%, and other than general category, it may be 5%. So meaning thereby, let's say if the project cost is for 1 crore, then you have to invest only 10 lakh rupees. And if you are in other category, if you are not into a general category, then you have to invest only 5 lakh rupees. Rest of the money you should be getting from the financial institution under this particular scheme. And this is being promoted by the central government very aggressively. Next is we talk about second loan for upgradation of the existing PM-EGP/Mudra units, यानी कि जो आपने पहले स्टेज पर जो यूनिट लगाई, अब उसका आपको फर्दर अपग्रेडेशन करना है, तो उसके लिए हमारे को कौन कौन सी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं? द मैक्सिमम सब्सिडी अगेन 15% of the project cost, 20% for NRE and hill states. The balance amount is provided by the banks as term loan. So again, whatever the upgradation is required, let's say you established a unit where the cost was 50 lakh rupees, आपकी यूनिट चल चुकी है, उसके बाद आपको फर्दर उसमें अपग्रेडेशन करना है, तो अपग्रेडेशन करने में आपको 15 से 20% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी, बैलेंस आपको टर्म लोन मिल जाएगा, एंड देन यू कैन अपग्रेड, एंड दैट इज कॉल्ड सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग PM-EGP/Mudra units. What all other informations are available? Scheme is applicable for existing/well performing units. The maximum cost of the project under manufacturing for upgradation is 1 crore and 25 lakhs under the service/trading sector. यानी कि आप 1 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो वो इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, लेकिन 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट अगर आपका है तो आप सेकंड लोन फॉर अपग्रेडेशन में भी बेनिफिट ले सकते हैं. But in case of a service/trading sector, that ceiling is 25 lakhs. So 1 crore is for manufacturing unit. So this is the another benefit which is available under this particular scheme. Again, friends, if we talk about CGT-MSE, we all are chartered accountants. हम लोग सब जानते हैं इस स्कीम के बारे में, और I think इस स्कीम पर तो हम काफी समय से काम भी करते आ रहे हैं. तो idea is to encourage the first generation entrepreneur to venture into self-employment opportunities by facilitating credit guarantee support for collateral free/third party guarantee. Means no third party guarantee is needed, no collateral security is needed. क्योंकि जब भी आप बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक बोलता है साहब आपको कितना लोन चाहिए, उसके अगेंस्ट आप मेरे को सिक्योरिटी क्या देने वाले हो. So in this case there is no security, and therefore it is called as credit guarantee scheme for micro and small enterprises. Benefits क्या है? Credit guarantee to loans up to 2 crore without collateral and third party guarantee. There are certain banks like as I mentioned in the initial remark also कि HDFC इस 2 करोड़ की जो सीलिंग है उसको 5 करोड़ तक they are giving you the collateral free loans. तो आप अपने किसी भी क्लाइंट को अगर 5 करोड़ तक की लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप HDFC भी अप्रोच कर सकते हैं, HDFC से फंडिंग करा सकते हैं. That will be a support from your side. That is a professional opportunity for you. And guarantee coverage, again, as you all know, guarantee coverage ranges from 85% micro enterprises up to 5 lakhs and to 75% more than 5 lakhs. 50% coverage is for retail activity. अब मैं इसका composition थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. Normally जब आप बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो बैंक्स are not willing to give you the loan under this scheme for more than 10 lakh rupees, because up to 10 lakh rupees the coverage is 100%, and over and above the coverage is 75%. So normally the bankers are avoiding, but if we talk about the scheme is being imposed by the government of India,
So they are bound to do these kind of loans. So my suggestion is, if you approach and suggest, and if you tell them that this scheme is the scheme of central government of India and the amount is already covered under this insurance, and you are bound to do this loan, so I'm sure they would be able to do that. The only thing is the bankers are more and more keen about कि जो borrower है, borrower के credentials क्या हैं. कई बार जो बैंकर्स को एक डर होता है कि भाई बोरोवर के क्रेडेंशियल्स ठीक हैं या नहीं है, क्योंकि आपको अगर याद होगा पहले एक चलता था PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना. तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या होता था कि जो बोरोवर था ये मान करके चलता था कि उसने लोन ले लिया तो अब उसको वापस नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक वरी of all the bankers. Like if someone has taken a loan and he is taking a loan just to keep in mind that this loan is not required to be refunded, so in that case that account will become an NPA. Therefore, normally the bankers are avoiding to give the credit facility under this CGT MSE. But again, if we convince about the credentials of the borrower, if we talk about the profile of the borrower, then definitely the banker should be ready to give the credit facility up to 2 crore without any collateral, without any third party guarantee. And as I mentioned, if we approach a particular bank, they are ready to give a loan up to 5 crore. And what all other informations are, a scheme is applicable for existing entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So meaning thereby, if you wanted to start new project, then also you can go and ask for this particular loan, and one can apply through lending institution, meaning thereby आपको बैंक या financial institution को approach करना होगा. Without approaching banks or financial institution, it would be difficult to get this kind of facility. Again, another benefit, another scheme of the central government, micro and small enterprise cluster development program. What is the idea behind that? To create, upgrade infrastructural facilities in the new existing industrial areas of MSME, promotion of green and sustainable manufacturing technology for the clusters, and to set up a common facility center. Friends, मैं इसमें थोड़ा सा एक आपको पहले brief बता देता हूँ, इसके background दे देता हूँ. Why this kind of clusters are being developed by the central government? आप देखेंगे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको जॉब वर्क कराना पड़ता है. छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो अपने यहाँ सारी फैसिलिटी को क्रिएट नहीं कर सकता. लेट्स से इफ समवन इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SS स्टील पाइप्स. अब SS स्टील पाइप में उन्होंने रॉ पाइप खरीदा, उसके बाद उसकी गैल्वेनाइजिंग होनी है, तो गैल्वेनाइजिंग के लिए उसको पूरा सेटअप रखना होगा. सेटअप के साथ साथ जो गैल्वेनाइजिंग का पोर्शन है, दैट इज ए गैल्वेनाइजिंग का जो ट्रीटमेंट है, दैट इज अ ट्रीटमेंट व्हिच क्रिएट्स पोल्यूशन आल्सो. नाउ either a client may have that setup in his own premises, but for that he need to take the permission from pollution control board. He need to have more investment. इस तरीके के जो मेरे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स लगती हैं, जो जॉब वर्क के लिए जॉब वर्क पे काम भेजते हैं, जॉब वर्क करवाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड क्लस्टर स्कीम वेयर दे हैव a proposition where you 15 to 20 manufacturers can establish this kind of cluster together with the support of Ministry of MSME. और वहां पर Ministry of MSME आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उस क्लस्टर को सेटअप करने के लिए. अब वो क्लस्टर जो आप बना रहे हो, दैट क्लस्टर इज available for use by all the 20-25 manufacturers who are willing to set up that kind of cluster. And believe me, the amount quantum which has been decided by the government, up to 20 crores investment, is being supported by the government of India. So if you create that kind of cluster, they will be identifying a place. Okay, this is the place, and this cluster shall be developed so that if anything is required to control the pollution also, that shall be there. All modernized equipment shall be there. So जो छोटे छोटे मेरे manufacturers हैं, they can send their goods for job work and that particular cluster, and after that they can complete their manufacturing process and they can sell it. So it is for the benefit of the small and medium, micro and small enterprises where they can use this cluster. Creation of, so it's a kind of common facility. This is the key benefit, and definitely support for infrastructure development projects including flatted factory complexes. छोटे छोटे complexes होते हैं, उनके पास इतना area भी नहीं होता जहां इस setup को बना सकें. And the important is, scheme is applicable for existing entrepreneurs
in the form of SPV, creation of tangible asset such as common production, design center, testing facilities, including plug and play facilities. एक इसमें छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं. There are manufacturers who manufacture the shoes. Now, there is one thing which is required, designing part. Every shoe manufacturer may not be having a designer. So there is a cluster who would be designing the shoes for each and every manufacturer. So in that case, let's say we have 20 small shoe manufacturers, then they need not to develop that kind of facility. They need not to worry about where they can get the design done. In the same way, there may be some quality control check. For that quality control check, again, they need not to have the laboratory. They need not to have the quality control check set up at their place. They can use this kind of cluster and they can avail that facility. So this facility is again available, but again, there must be a group of 15, 20 people. They can approach the Ministry of Affairs, Ministry of MSME, where they can ask for that they wanted to have their own cluster in this particular area. And if they submit a detailed project report, they will get the support from Ministry of MSME. A scheme of fund for regeneration of traditional industries. I'm sure आप सबको पता होगा बहुत सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी. उनको रीजनरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद दिस स्कीम, and the objective is to promote traditional sectors and increase income of artisans, providing sustainable employment to organize traditional industries and artisan into collectives by increasing production and value addition to make products competitive. इसमें आपको बेनिफिट्स क्या हैं? आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है अप टू 2.5 करोड़ टू फॉर अप टू 500 artisans, for up to 5 crore for more than 500, and production facilities with modern machineries, raw material support. These things are being provided by the government, and a scheme is applicable for existing people from traditional industries, cluster of artisans in sectors such as handicrafts, textiles, agro processing, bamboo, honey, coir, khadi, as we were talking about this khadi village also. So these are the areas where these facilities are allowed. Especially if we talk about textile has faced lots of challenges in the past. Again, if we talk about textile, again, there are two different things, printing, dyeing. Then if there is a printing or a dyeing, then dyeing unit is again creating lots of pollution. So by creating this kind of support, they are, yes, because if you are into the dyeing of a textile, then you may not be able to create an infrastructure where you can protect the pollution. So by availing this facility from the government of India, you would be able to have a setup where you would be having a pollution-free industry, and you would be starting, you would be regenerating your unit, you would be regenerating the products, and you would be into the market. You would be facing, you would not be facing any competition in the market. Entrepreneurship and skill development programs, ESDP, again, this is for promoting new enterprises, capacity building of existing MSMEs, and including entrepreneurial culture in the country. The key benefit is to widen the base of entrepreneurship by development, achievement, and motivation entrepreneurial skills to the different sections of the society. And aspiring and existing entrepreneurs can avail the benefit of ESDP. In the chain of this particular program, like today I am in Lucknow. So in Lucknow again, there is a 2 days MSME Sammelan is going on. So the idea is where the entrepreneur who are into MSME, who are running MSME, they can come here, they can gather the knowledge from the other expertise who are here. Let's say someone is talking about the shoe manufacturing, then there may be the experts of shoe manufacturing, where you can understand how you can grow into your business, how can you establish your business in a better way. These kind of skills are being given to the entrepreneurs over a period of time, and for the said purpose, Ministry of MSME is organizing so many programs, and we start connecting with the MSME sector, then definitely we would be getting lots of alerts, and we would be able to attend these programs.
And as a chartered accountant, we would be able to guide our clients also, like, okay, you start this project and this project shall be beneficial for you. You may get these benefits out of this particular project. So this is what, in my opinion, again, a very useful and useful support from the central government. Assistance to training institutions scheme. Let's say if you wanted to have some infrastructure, especially for skill development, आई एम श्योर आप सबने सुना भी होगा, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बने हुए हैं. तो एक तो हो गया स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तत्वाधान में जनरेट किए गए हैं, जहां पर आप नॉर्मली जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी आप स्किल सेट को डिसाइड करते हो. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द training institution where you can develop the training institution according to the need of your industry. And let's say if you are 10 manufacturers into the same trade, where you may have it's a kind of concept of a cluster where you have established a training institute and where you are deputing your team for a training before starting the job. There are two options: before starting a job or on the job training. So from time to time you are deputing their employees for the training purposes. This is the whole idea. And for that also, you also get the support from Ministry of MSME. And the idea is, as I mentioned, where you can have many programs for training your employees, support for infrastructure and capacity building. This is what specifically this government is looking for. And scheme is applicable only for training institutes and nothing else. So Ministry of MSME and state level EDIs shall be supporting you for setting up of this kind of training institutions. Koir Vikas Yojana, as I mentioned earlier, also there is a scheme which is specifically for skill upgradation and Mahila Koir Yojana. Objective is to impart training in processing of coir and value addition to potential workers, coir artisans, through field training centers and training institutions of coir board. Provide self-employment opportunities to rural artisans, including women artisans in regions processing coconut husk. मेनली अगर आप देखोगे तो कॉयर बोर्ड एक हमारा कैलकाटा में बना हुआ है, जैसे टी बोर्ड, कॉयर बोर्ड. सो नॉर्मली इट इज देयर इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, but still this kind of facilities you can develop. And the key benefits are training to personnel in the cadres of supervisors in the coir industry, conducting exposure tours to the rural artisans for familiarizing with the newly incorporated technologies. And a scheme is applicable only for existing and aspiring entrepreneurs. The regular training offered under the scheme are stipendary. Means आपको यहाँ आपको जो ट्रेनिंग भी जो दी जा रही है उसमें आपको वहाँ स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है. एंड दैट स्टाइपेंड शैल बी it's like while any article is joining your place, then again you are giving an stipend to him. तो हम लोग नॉर्मली अपने कोर्स में भी बोलते हैं कि this is the only course where you earn while you learn. In the same way, Coir Vikas, under this Coir Vikas Yojana, whenever you are going for a training, then also you get the stipend. So that is again a very motivating factor, and especially they are willing to train the women employees for this particular Yojana. Friends, this is a very interesting part where we are talking about procurement and marketing support schemes, and that is as good as you are participating in various exhibitions, expos held across the country or outside the country. That scheme is available, and the components of the scheme are market access initiatives across the country, participation of individual MSMEs in trade fairs, exhibitions, vendor development programs, capacity building, adoption of barcode, adoption of e-commerce platform, national workshops, seminars, development of retail outlet. And this kind of support is like where the government is giving a training, like how can you participate and how can you expand your business. So this is what exactly the idea about this scheme. Initially, we were talking about some SRI fund, self-reliant fund. So the idea is, while you have your own setup, and if you need more support, financial support to establish your institution, to establish your industry, there is a scheme called SRI fund.
And the target group is visible MSMEs with a positive growth trajectory. It should not be like there is a downfall in the turnover. There should be a positive growth. There is no ceiling of whether the positive growth should be 5%, 10%, or 15%. That should be positive growth. Even if 2% positive growth is there, then also it will work. Total corpus which the government is having as of now, government is willing to contribute around 10,000 crores under this scheme. Tenure of the fund shall be around 15 years, and its scope is disbursement to MSMEs across the country, impacting lives far and wide. Means this is again the scope, and fund type is daughter fund, can be categorized 1 or 2 AIFs registered with SEBI. Exclusion, it's not available for NGOs, it's not available for Section 8 companies, it's not available for NBFCs, it's not available for financial institutions or any financial intermediary. That is available only for the units which are engaged either in manufacturing or in a trading, but not into the money lending activity. Credit guarantee schemes for subordinate debt for stressed MSME, as I have already discussed earlier also, during the COVID, a lot of units have faced challenges and units got converted into the stress assets. So if we talk about GCL or GCL1 or GCL 2.0 or 2.1, these schemes were available for the units which were not stressed. There was a certain condition, like if your account is not an NPA or not a substandard account, then only these benefits were available. It's a different issue. The banks have utilized these schemes for making their account standard. But for the purpose of stressed assets, there was a specific scheme, and none of the bank has utilized this scheme for making their account standard, because this scheme is available only for stressed MSMEs, but the ceiling is 75 lakhs. It should not be more than 75 lakhs. And in most of the borrowers' cases, the amount which was required to convert their account as an standard account, that was substantially higher than the 75 lakh rupees. So they have taken a benefit of GCL 1, GCL 2, GCL 2.1, which was actually not allowed as per the government policy. But in any case, that is the past now. So we talk about this scheme. So under this scheme, a borrower is allowed to get 15% of the total investment. And we talk about total investment or total stake, that includes equity plus debt, or 75 lakh rupees, whichever is lower. And the repayment period is maximum 10 years. And there is a moratorium of 7 years on payment of principal, meaning thereby आपको सिर्फ 7 साल तक इंटरेस्ट देना है और अगले 3 साल में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों देना है. And if we talk about the security part, then 90% of the guarantee comes from the scheme and 10% from the promoters concerned. So this is all about as far as credit guarantee scheme for subordinate debts for stressed MSME. So as of now, if any of your client is facing challenges, account has got converted into a substandard asset or an NPA, you can very well suggest him to go for this scheme, or you can support him to get this funding done from the financial institution, which is very well allowed by the central government, which comes under the central government scheme. So friends, these are the certain schemes which are presently available from the central government. Earlier, there was a scheme for capital subsidy also. That scheme was eligible up to 31st March 2020, where the units were MSME units were eligible for a capital subsidy of 15% of the investment. These kind of schemes are as of now are also going on. Apart from the MSME, I'm sure you all must be aware, government is promoting, central government is promoting a lot of investment, foreign investment in India, and for that they have created a nodal agency, the named investindia.gov.in. So I request you to kindly, this name of the nodal agency, Invest India. And if you talk about the website of this agency is www.investindia.gov.in. So that site talks about in which state, what all projects are being promoted by the central government. And for these projects,
who all are eligible to invest. Even the country's help desk is also available there. Let's say if you wanted to go for a manufacturing of electronic goods, again, they will talk about for manufacturing goods, which all states are eligible for giving the benefits to the investors, and who all are there. Let's say China can come for the manufacturing of electronic goods. China can come for manufacturing of batteries. Japan can come for automobile industry. Uh, like that. They have a help desk also, and where you and your client can get the assistance without any charge. Mind it, for availing the facility from Invest India, which is a nodal agency duly appointed by the central government of India, is a nodal agency which is connecting you or your client with the state government, they will guide you what all schemes are available, what all benefits are available, what items you can import without payment of any duty, with what items you can import duty free, what all other benefits you are available, you can avail for your clients. Like if we talk, I'll just touch upon this UP Electronic Policy 2017, where there is a specific scheme. If your investment, like Noida has been created as an electronic hub. Now in Noida, if anyone would like to invest for manufacturing of electronic goods, and if the investment is for more than 200 crore, that investor is eligible for getting the subsidy to the extent of his investment into capex. Now, if we talk about the capex means amount invested other than investment in land and building. Similarly, if the investment is less than 200 crores, meaning thereby, let's say if it is 50 crore, 60 crore, 100 crore, that subsidy is available to the extent of 25%, maximum up to 50 crore. And that is again in a different shape. That subsidy is available in cash component also. That subsidy is available in by way of reimbursement of SGST, by way of getting the benefit of employers' contribution towards the PF, by way of reimbursement of training charges, where you are deputing your employees for training overseas. These all charges are available for reimbursement. Apart from that, there are two other things which are very important if we talk about MSME: interest benefit. So if you are registered with MSME, then definitely the interest being charged by the banks is 1% lower than the interest being charged from the normal client. So if you are MSME registered unit, your interest being charged by the bank shall be at least 1% lesser than the normal interest which they are charging from the other borrowers. Number two, credit period available to you is 45 days. Within 45 days, your supplier, your customer need to pay your money. And if you don't get the money within 45 days, you have a remedy available where you can file a case against him and you can recover your money. Apart from that, after 45 days, you are eligible to charge the interest also, because that is again a mandatory requirement under the MSME. And the important issue here, I'm sure you all must be aware that while you go for a loan, that loan may be a term loan, that loan may be a cash credit facility. And by any chance, if your borrower is willing or your client is willing to foreclose that particular account, then the banks are charging foreclosure charges that may be 2%, 3%, 4% of your loan outstanding. Friends, if your unit is registered under MSME, no bank can charge foreclosure charges, meaning thereby, even if you would like to close the account today, then also you are free to close it today, and that shall be without any foreclosure charges, which is again a very substantial benefit available. Let's say अभी आप स्टेट बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी 10% पर अवेल कर रहे हैं, एंड आपको HDFC 8% पर आपको लोन दे रहा है, then definitely you can ask for foreclosure from State Bank of India without paying any foreclosure charges out of it. So this is all about from my side as far as the incentives which are available from the central government of India. The incentives from state government, you all need to go through with the website of the state website, and it would be available what all benefits are available against the state government. As I mentioned, I have just given an example of UP.
So apart from the UP, other states are having different benefits. Other states are having different projects also. And for different projects, different incentives are available. With these words, I am again thankful to the team CIRC for inviting me for this deliberation, especially on MSME and especially on the MSME day. So if any of my friend is having any question related to MSME, you are free to ask the question. I will try to answer your questions. And I think someone has raised the hand. Lokesh ji? Yes, sir. I think someone has raised the hands. No, sir. No? Okay. Any question from any of our friends here as far as the MSME is concerned? अगर किसी भी मेंबर का जो सर ने हमें एमएसएमई के बारे में जितनी भी स्कीम बताई है, गवर्नमेंट की स्कीम, इंटरेस्ट वाली जो स्कीम्स बताई है, अगर किसी भी मेंबर्स का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है ताकि सर उसको उसका रिप्लाई दे पाए. किसी भी मेंबर का क्वेश्चन है, अगर वो और कोई इश्यू है तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है. इसमें मैं लोकेश जी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा. हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू काइंडली गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई. नंबर 1, बिल्कुल सर, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो उसमें आपको क्लाइंट से अपनी फीस रिकवर करने के लिए 45 डेज का टाइम है. एंड इफ एनी क्लाइंट ऑफ योर्स इज नॉट गिविंग अ फी, तो आप उसको कह सकते हो कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, आपको 45 डेज में अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और इसमें एक और बहुत अच्छी बात है एमएसएमई में कि देयर इज ए रिकवरी प्रोसीडिंग्स. कई बार क्या होता है कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है और किसी आपके कस्टमर के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया, यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर ड्यूज. बट एमएसएमई में अगर रजिस्टर्ड है तो आप एमएसएमई में केस फाइल कर सकते हैं, स्टेट एमएसएमई में भी केस फाइल कर सकते हैं. तो सर समाधान करने समाधान है ना. तो वहां से आपको पेमेंट मिल जाती है. और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर चाहें, अगर हम लोग अपना एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जाना चाहते हैं, तो देयर इज ए पोर्टल कॉल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सो वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एज वेल. और उसमें हम, क्योंकि कई बार लोगों का कहना ये होता है कि साहब हमारे पास फॉरेन क्लाइंट्स कैसे आएगा. सो if you are registered with the service export promotion council, तो जो मेरे बाहर क्लाइंट्स बैठे हुए हैं उनको भी अगर कोई आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, then you can avail the benefit from these clients. कोई मिस्टर सी मनीष जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया. मैंने आपको अलाउ कर दिया है. मनीष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Yes. So actually my question is from the industry side. Yeah, tell me sir. We are making the payment of MSME vendors in 45 days. Right. And complying the law. Right. But later on we came to know that they are not filing the GST return and their GST filing is not available in the GST Act. Sir, so in what that is the case, remedy available to us? Yeah, for that what is important is what you can ask for while you release your payment. Either you can hold the GST component, okay, with a letter in writing that as we do not have any supporting evidence regarding the payment of GST, we are releasing this much payment to you, and you kindly submit the proof of payment of GST, then we will release your balance payment. So lesser payment is allowed on account of GST, sir? Yes, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं. नॉर्मली इंडस्ट्री क्या करती है, अंडरटेकिंग ले लेती हैं कि भाई, और अदरवाइज दे आस्क फॉर द, जैसे आप पेमेंट रिलीज कर रहे हो 45 डेज के अंदर तो आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि भैया मेरे को आप जीएसटी का प्रूफ दो, क्योंकि जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो पहले आपसे जीएसटी का प्रूफ लेती है, तब आपका पेमेंट रिलीज करती हैं. ये चैलेंज आ रहा है सर कि क्योंकि जो आपकी क्वार्टरली स्कीम आ गई और मंथली स्कीम आ गई, तो वो जो छोटे वेंडर हैं जिनको क्वार्टरली पेमेंट करना होता है, टेक्निकली उसमें भी मंथली पेमेंट भी है, क्वार्टरली पेमेंट भी है. रिटर्न वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है, पेमेंट वो मंथली कर सकता है. सो व्हाट यू कैन सजेस्ट टू योर कस्टमर कि भैया आप मेरा पेमेंट कर दो, या अपने सप्लायर को भी आप कर सकते हो कि आप जीएसटी का पेमेंट कर दो, आप रिटर्न क्वार्टरली डालते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. पेमेंट करके चालान की कॉपी आप मेरे को दे दो, एंड देन यू कैन रिलीज द पेमेंट. ओके सर, थैंक यू. राइट सर, थैंक यू. एनी अदर क्वेरी? Any other query from member side?
मेरी मेंबर से रिक्वेस्ट है, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, उनको आप सब पर एमएसएमई पर अगर काम करना शुरू करें, तो आपके क्लाइंट्स को भी इतना आइडिया नहीं है एमएसएमई में, and lots of professional opportunities you can avail, you can take the benefit of the schemes. आप अपने क्लाइंट को बेनिफिट दिलवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी फीस मिलनी है उसकी। ओके, देयर इज नो क्वेरीज एट ऑल। मैं सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर जो हमारा सीआईआरसी ने बहुत ही लर्नेड स्पीकर हमारे पास्ट आरसीएम भी है और सर की नॉलेज है जो बिल्कुल हर जगह देखेंगे बिल्कुल वास्ट इसमें नॉलेज। एक क्वेश्चन है सर, इनका पायल जी का है, where she is talking about where to read more on each schemes. तो ये आप अगर एमएसएमई की साइट पर जाएंगी पायल जी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की साइट पर जाएंगी, वहां पर स्टेट वाइज स्कीम भी दी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी दी हुई हैं। और अगर आप उसको स्टेट स्पेसिफिक स्कीम पर आपको जाना है कि वो किस स्टेट में कौन से प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है, तो आपको फिर स्टेट की साइट पर जाना पड़ेगा। और उसको आपको शॉर्टकट करना है तो आप investindia.gov.in पर चले जाइए, वहां पर स्टेट वाइज प्रोजेक्ट डिफाइंड है कि किस स्टेट्स में कौन से प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है वो तो रहेंगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रोजेक्ट को किस स्टेट में प्रमोट कर रही है, उसके लिए investindia.gov.in पर चले जाइए, स्टेट वाइज आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, मिल जाएगी आप। थैंक यू सर जी। सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट भी है कि कल जो अभी सीआईआरसी 75 डेज 75 एक्टिविटीज के अंदर जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके अंदर कल हमारा सेशन इनकम टैक्स पर होगा। और जो सेशन होगा वो एनजीओ फॉर्मेशन एंड टैक्सेशन के बारे में होगा। तो जितनी भी सोसाइटी एओपी, उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उनका आईटीआर भरते टाइम, टैक्सेशन के टाइम पर जो आपको चीजें, प्लानिंग के टाइम पर जो आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, उसके बारे में एनलाइटन करेंगे जयपुर से सीए शैलेश मंत्री जी। आज का सेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं दोनों हमारे सेशन। और जो बाद वाला सेशन था इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर, हमारे पास्ट आरसीएम और पास्ट वाइस चेयरमैन ऑफ सीआईआरसी श्री अतुल अग्रवाल जी ने दिया। सर आपने बिजी शेड्यूल में से, जैसा कि अतुल जी ने बताया था कि आज सारे लोग जो एमएसएमई पर बोलते हैं सब बिजी हैं, लेकिन आपने सीआईआरसी को पूरा इंपॉर्टेंस दिया और हम हमारे निवेदन को स्वीकार किया। इसके लिए मैं सर बिल्कुल आपको थैंक यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए सौभाग्य की बात है लोकेश जी, सीआईआरसी और मेंबर्स के लिए मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ। मैं एक्चुअली आज लखनऊ में ही हूँ और यहाँ हमारा 2 दिन का एमएसएमई सम्मेलन है एसोचैम की तरफ से, एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ एसोचैम, मैं मेंबर हूँ एसोचैम का। तो डेफिनेटली सर, आपने जब आप सीआईआरसी के थे अंदर, जब एज ए आरसीएम काम कर रहे थे, तब भी हमने आपके डेडिकेशंस को देखा है। आपने जो हमारे जो यंग मेंबर्स हैं उनके लिए आपने बहुत काम किया है। तो डेफिनेटली सर आपके काम को भी सीआईआरसी हमेशा सैल्यूट करता है। डेफिनेटली सभी मेंबर्स कल जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।